Hey, good evening, everyone. I'm Vishwesh and hope you're able to hear my voice. Today is the 18th March 2020, 6:30, and we are right on the time. And we're waiting for some more people to wait, join. The whole point of having a webinar on a future is because these days it's very critical that the way you trade and if you carry a position you have to maintain some sort of a money management model, but the whole point here is that when you take a futures position it's very difficult to manage your risk. And today I'm going to show you some of the techniques which I use on index and as well as the stocks that you can incorporate into your existing trading methodology, and how can you benefit of them. So I hope you're able to hear me and my voice is loud and clear. Good evening, everyone. A lot of good evening messages. Guys, use the question panel only for the questions. For rest of the things, you can use the chat box. And we are sharp on the time, and we shall begin. Just a viewer undertaking. Just keep in mind, in case you find your user ID password. Uh, sharing with someone, so probably you should just abide by this undertaking, not just a disclaimer for you guys. Fine, so let us begin the session, and while more people are going to join, I'm going to begin anyway. Most of you might be knowing, I'm an analyst and a trader, in market since 2006, and I worked in India as well as the Asia, Australia for quite some time. And right now I'm running a my own organization named Cheese Alpha. You can read more about me in a Money Control article. It's the trading journey which I have, shared with the Money Control team, and they have articulated very well. So fine, let's begin the session without wasting much time, and let us understand that how you're gonna use the session in order to incorporate into your day trading future especially. But this is a four webinar series around the momentum. Two is on the future, one is positional, one is intraday, and two is on the options. One is the positional and one is intraday. And in options, we're gonna see only about the buying of options, because that's what I've realized. A lot of smaller ticket size people find themselves finding difficult to incorporate the strategy. But as far as the future is concerned, आप इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो और आप पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हो. Previous session that we had turned out to be very nice, and I believe a lot of you people have given very nice feedback. Thank you so much, and I really appreciate the way uh, the way you have given, but a lot of the people were not able to give a feedback. So हमारी टीम आपको एक ईमेल करेगी, so please अपना 2 मिनट टाइम निकाल के जो फीडबैक रहेगा वो आप दे सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस मोमेंटम सेशन अटेंड किया था तो. मैं आज के जो मोमेंटम सेशन के अंदर मैं चीजें कवर करने वाला हूँ, वो मोस्ट ऑफ द चीजें ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी डिड previously. So मैं assume कर रहा हूँ कि lot of the people have already you know attended our momentum positional webinar, and आज जो हम करेंगे वो चीजें के ऊपर उसके अलावा क्या हम करते हैं in order to be a profitable intraday trader. See, day trading is largely different ball game altogether, and you have to understand that in a day trading the kind of acumen that you require is very different compared to the positional के अंदर आपका जो मनी मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है, डे ट्रेडिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट अलग होता है, डे ट्रेडिंग के अंदर अप्रोच भी अलग होता है, वेरएज मोमेंटम के अंदर अप्रोच होता है. बट इन सब चीजों का अगर आप summation karo, so the thing which comes to my mind is that both of the things require some sort of a plan. और आज के दिन में हम उसका
बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने ये जो प्रेज़ेंटेशन आज प्रेज़ेंट करूँगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कोई इतनी ज़्यादा ज्ञानबाज़ी नहीं है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट लॉट ऑफ द थियरीज़ अराउंड हियर। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेबल चीज़। अगर आप उतनी चीज़ें भी करते हो फ्यूचर्स में, तो मेरे हिसाब से योर ट्रेडिंग शुड बी लार्जली इम्प्रूव्ड। एंड वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट अ ट्रेडिंग के अंदर में आपके पास एक सिंपल चॉइस होती है कि जब आप ट्रेड करते हो, तो आप क्या सोच के ट्रेड करो। मैंने इन इंट्राडे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट योर थॉट प्रोसेस एंड योर प्रिपरेशन फॉर द ट्रेड इज वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू द पोजिशनल थिंग। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एंड लॉट ऑफ द पीपल ऑफन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि हाउ कैन intraday be different than the positional, and the simple thing is that positional के अंदर में bigger targets bigger stop losses होते हैं, and that's what I would like to believe, because जब आप positional trade करते हो तो हमारी जो first series थी momentum series positional के लिए, उसमें हमने बहुत largely ये चीज़ को discuss किया था कि आप कैसे view form करते हो, क्या टेक्निक यूज करते हो, कैसे लार्जर ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड करते हो, जब आप ट्रेड करते हो तो टारगेट्स कैसे ढूंढते हो, जब आप ट्रेड करते हो तो आप स्टॉप लॉसेस कैसे रखते हो। तो अगर आपने नहीं देखा है, आई वुड एनकरेज यू टू हैव अ लुक एट इट। जिन्होंने देखा है उनके लिए फॉर इट विल बी वेरी इजियर टू इनकॉर्पोरेट द थिंग। वन मोर थिंग इज दैट मैं जितने भी इंट्राडे डे ट्रेडर को जानता हूँ जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में काम करते हैं, फॉर देम द मोस्ट ऑफ द थिंग इज अबाउट risk mitigation. They say that the biggest risk are gap up, gap down, and if we are trading intraday, we are trading in front of our screen, and most of the time our stop losses are in the systems, so that helps us risk from gap up, gap down. So intraday versus positional की जहां तक बात होती है, मेरे हिसाब से lot of the people does intraday futures for the simple reason because they have uh, some sort of a lesser risk appetite compared to the people who are doing positional. एंड मेरे ख्याल से इंट्राडे में फ्यूचर्स करने वालों का जो रिस्क एपेटाइट के साथ में क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज दे वांट टू टेक अ हायर क्वांटिटी। व्हाट दे डू इज दे कीप द पोजीशन स्मॉलर। now as far as the intraday is concerned, you have to understand that in an equity, especially in a stock, lot of the moves जो आते हैं वो गैप अप गैप डाउन में आते हैं। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, your job is not about eyeing a bigger move. Your job is sticking to the plans, following the some sort of a प्रोसेस। और उस प्रोसेस में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको गैप अप गैप डाउन का डर नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो टाइम होता है वो 9:30 से 9:15 से 3:30 तक का होता है। उसमें कई बार अगर स्टॉक 5% 6% गैप अप गैप डाउन, तो उसके बाद आप क्या करें, बिकॉज पोजिशनली द स्टॉक इज डेफिनेटली लुकिंग गुड, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंट्राडे, it may have just already move has already happened. So the whole point here is जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपका अक्यूमिन और आपकी जो प्रोसेस है वो काफी अलग होती है कंपेयर टू द पोजिशनल, बिकॉज आपके पास टाइम कम होता है और बड़ा मूव शायद इनकॉर्पोरेट हो चुका होता है, और आपके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि अब क्या करें। one more thing that which I have realized a lot of people needs to understand is that positional के अंदर जब आप बड़ा मूव राइड करते हो, you are looking for a some sort of a you know smaller quantity riding for a bigger moves, और जब आप इंट्राडे की बात करते हो तो आपके पास क्वांटिटी रिलेटिवली ज्यादा होते हैं, आप लिवरेज होते हो, यू आर आइंग अ स्मॉलर मूव विद अ बिगर क्वांटिटी, बिकॉज one is your risk limited, at the same time your you don't have a worry about a gap up gap down. Last thing in my opinion जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है, some of the very successful intraday futures traders के point of view से, is that intraday futures जो trader होते हैं वो most of the time इंडिकेटर्स का जो अप्रोच होता है वो बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू द समबडी हु इज ट्रेडिंग पोजिशनल। इंट्राडे फ्यूचर्स का जो ट्रेडिंग सेटअप होता है, आपका चार्ट का सेटअप होता है, आप जिस तरह से ट्रेंड को एनालाइज करते हो वो लिटिल डिफरेंट होता है कंपेयर टू दी पोजिशनल ट्रेडर। वाइल द वे आई ट्रेड, जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं लार्जली जो
लार्जर ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में ही रिट्रेट करता हूँ, और वो मेरा सेटअप है, वो मैं आज शेयर करूंगा। आई विल शेयर वेरी डिटेल्ड सेटअप अबाउट इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड्स एंड स्टॉक फ्यूचर ट्रेड, एंड आई विल शेयर वन वेरी गुड ट्रेडिंग सिस्टम जो मैं खुद यूज करता हूँ, जो बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन इन अ मार्केट वेर यू गेट अ लार्ज मूव यू कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसका क्या सेटअप होता है, उसका कैसा टाइम फ्रेम होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में एक के बाद एक देखेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंट्राडे और पोजिशनल की हम बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ trading per se, and we are not talking about a scalping. In this case also, I'm talking about a momentum intraday trading and not a scalping. When I'm talking about a momentum intraday trading, you're gonna create a position and you would like to hold the position for a while. You would like to hold a position for, let's say, couple of hours, 3 hour, 4 hour, and depending on your stop loss or target, you want to trail or exit it. सो लार्जली डिफरेंस को आप चार पांच पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो, बिगर टारगेट, बिगर स्टॉप लॉस। एट द सेम टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट गैप अप गैप डाउन का रिस्क नहीं रहता है। मेजर मूव जो होते हैं गैप अप गैप डाउन में होते हैं। वन मोर थिंग विच आई हैव रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज दैट choice of indicators vary, when you're talking about a positional intraday, or मैं personally combinations of bounded and unbounded use oscillator use करता हूँ। मेरे ख्याल से most of the people by now have a fair idea कि bounded or unbounded oscillators क्या होते हैं। When you're talking about a bounded oscillator, you're talking about a range. It is going to be either 100 to 0, either let's say a stochastic analysis are bounded oscillator, और जबकि MACD हो गया या ADX हो गया, दोज गाइज आर योर अनबाउंडेड ऑसिलेटर। और उन दोनों को भी मैं बहुत अलग तरीके से अप्रोच करता हूँ, विच आई एम गोना टेक अप इन सम टाइम। और एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जब आप डे ट्रेड कर रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग मोस्ट ऑफ द पोजीशन इंट्राडे, यू आर लुकिंग फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस इंडिकेटर दैट इट इज पॉइंटिंग इन अ वन डायरेक्शन। सो आपका एक सिंपल सा अप्रोच होना चाहिए कि यू वुड ट्रेड, जैसे हम मोमेंटम पोजिशनल में भी कंफ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स के कंफर्मेशन पे ट्रेड कर रहे थे, इंट्राडे में भी हम वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे अनकोरिलेटेड ऑसिलेटर्स हैं, जिसमें मैं प्राइस बेस्ड ऑसिलेटर लेता हूँ, और RSI MACDs आर बेसिकली अ प्राइस बेस्ड। वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स में काफी सारे मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं वीवैप है, वीवैप को वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर में कंसिडर करता हूँ। और वीवैप अगर आपको पता हो तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, which is, और मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, आई विल शो यू, वी विल सी द चार्ट्स एंड ऑल। मोमेंटम के अंदर मैं अलॉन्ग विद MACD ADX का यूज करता हूँ, और इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके मैं इंट्राडे के अंदर फाइन ट्यून करने की कोशिश करता हूँ। Along with that, I also use, I mostly see the future chart when I'm talking about intraday futures, और future charts रहते हैं तो मैं open interest को यूज करता हूँ। और स्पेशली जिस तरह से मैं मोमेंटम को इंट्राडे में यूज करता हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट को बहुत डिफरेंटली प्लॉट करता हूँ कंपेयर टू व्हाट यू माइट बी सीइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इन सब चीजों का अगर आप मिक्सचर करते हो ऑन योर smaller time frame intraday charts, then probably you would understand कि largely it is not very different from a positional, but the approach is varies when it comes to the intraday. One more thing which you should understand before we begin, going into the charts and setups and all, larger time frame is always important thing। एंड एक चीज मतलब आपको यहाँ लिखना है तो अपने ट्रेडिंग डेस्क पे आपके बोल्ड लेटर में लिख सकते हो, लार्जर टाइम फ्रेम ऑलवेज हैव अ हायर वेटेज। सो माय स्टॉक सिलेक्शन कम्स फ्रॉम द लार्जर टाइम फ्रेम, माय स्टॉक सिलेक्शन कम्स फ्रॉम द लार्जर फिल्टर्स। आई ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ लार्जर टाइम फ्रेम। तो फिलहाल अगर मार्केट मुझे वीक लग रहा है तो मैं पुल बैक्स में इंट्राडे में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, नॉट अ वाइस वर्सा कि अगर मार्केट गिरा हुआ है तो इंट्राडे में मैं खरीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखता हूँ। व्हाट आई लुक फॉर इज ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, आप इसको कैसे यूज करोगे। सो first करोगे, if you're talking about some stock which is falling and if it is doing a pullback in an intraday, how would you initiate? So intraday for me is a fine tuning of my entry in the direction of a larger trend। तो larger trend अगर down है तो I would look for a shorting opportunity intraday। Most of the time my targets also come from the larger time frame। So I was trading IndusInd Bank, I was trading LIC Housing, I was trading PVR, Nifty, Bank Nifty, Tata Steel, you name the stock,
मोस्ट ऑफ द टारगेट्स केम फ्रॉम द लार्जर टाइम फ्रेम। और कैसे हमने टारगेट निकाला था, क्या हम यूज करते हैं, वो हमने हमारी फर्स्ट सीरीज के अंदर बहुत डिटेल में कवर किया था। यू कैन हैव अ लुक एट इट, हाउ वी हैव फाउंड इट। इफ यू हैव अ डिफिकल्टी, आई एम गोइंग टू कवर इट ओवर हियर आल्सो टू एन एक्सटेंट जो आपको समझ में आए। वन मोर थिंग, मेरे हिसाब से इंट्राडे के अंदर द वे आई ट्रेड, लोअर टाइम फ्रेम इज मोस्टली फॉर अ राइडिंग। सो सपोज शॉर्ट सिग्नल है, इंडसइंड बैंक मैन, इफ इट डज समथिंग, आई वुड लुक टू राइड इट ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, बिकॉज लार्जर टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉसेस और टारगेट बड़े हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम इज गोइंग टू गिव यू, सो इफ द लार्जर टाइम फ्रेम इज शॉर्ट, you would look for short exit, short exit, short exit. If larger time frame is long, you look for long exit, long exit, long exit. I don't look for a, you know, I don't look for a contrarian trades when it comes to the, you know, especially the intraday time frame. So suppose ये market गिर रहा है और suppose यहाँ पे कुछ breakdown हुआ है, and at this point of time my target is, let's say, this line. Now, or if this is a daily time frame, then during the, let's say, 15-minute or 30-minute, all the pullbacks I would look to sell. This is a primarily a multi-time frame analysis technique, and which I have shared during our, you know, momentum stock selection first positional. That how do you use a momentum, you know, on a higher time frame to find out the targets and all the things. One more thing which I would like to highlight is that your job on a lower time frame, especially when you're trading a futures, is to fine tune your entry using the VWAP, using swing high, swing lows, using the one of the technique which I'm going to share. You are looking for a finer entry and finer target. So let us look at the example of what I mean when I'm talking about a larger time frame rules. So this is a daily chart of a stock name. This is a weekly chart of a stock name LIC Housing Finance. और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि on a budget day I give a short on this call stock around 550 and 500 odd rupees मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने short दिया था अराउंड यहाँ पे। उसके बाद में दिस एंटायर रैली एंड माय टारगेट वाज 280 रुपीस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रैपिडली होगा। सो यू सी दिस वाज अ लार्ज हेड एंड शोल्डर which seemed like a failed over here, you know, which seemed like a failed over here. But when this stock was pulling back, this was almost a 1 year pullback, right? And this, when it broke around 500, you know, around this level, around a 530 odd level, the one thing was for very sure कि इसके बाद का जो pullback है वो हमको short करना है। तो ये जो portion था, which was your larger pullback, this portion was your smaller pullback. Now, in this entire time frame, I never look for buying the LIC Housing Finance. So whenever the breakout on the larger time frame occurs, I look for a shorting on the daily, on the hourly, on the weekly, on the 15-minute. And the way I'm going to show you is that larger time frame की डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, विच इज, you know, trading against the trend. Okay, one more thing is that when you're trading a smaller time frame in the direction of a larger time frame, you are automatically choosing the, you know, direction which market itself is doing. और जब मैं लार्जर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ व्यू कमिंग फ्रॉम अ डेली, वीकली, and probably if you are trading, you know, very fast, then probably hourly. You are looking for a 5 minute, 3 minute or whatever that time frame only for a timing purpose. So in this particular case मेरा व्यू जो था वो bearish था because यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैग पैटर्न था और जब यहाँ पे डबल टॉप बना, I was looking to short and my target which was coming 280 odd rupees was coming from the larger time frame, and that is how I have given. तो इससे क्या होता है कि larger time frame की डायरेक्शन में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो सारे पुलबैक्स फिजल आउट हो जाते हैं, एंड इसका जो टारगेट है उसके लिए आप किस तरह से क्या यूज करोगे, क्या इंडिकेटर देखोगे, दैट आई विल शो यू इन सम टाइम। बट आप ये समझिए कि दिस जस्ट वन एग्जाम्पल, लेटर शायद हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर में बाय एंड लार्ज हम हमारे लार्जर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे टाइम करते हैं। नाउ ये रहा स्टॉक। व्हाट अबाउट द व्हाट आई लुक फॉर व्हेन आई एम लुकिंग एट द इंडेक्स चार्ट, यू नो। सो ये मेरा इंडेक्स चार्ट का सेटअप है और ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को फाल्कन कहते हैं, राइट। मेरे ख्याल से सिमिलर सेटअप्स आप बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर पे बना सकते हो, बट आप इसमें देखिए ये जो डैश लाइन है यहाँ पे,
this dash line, and let me just change a color for you to understand. या ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली, ये जो इसको सेशन ब्रेक कहते हैं। तो दिस पर्टिकुलर चार्ट इज ऑफ टुडे। इन व्हाट आई लुक फॉर इन माय चार्ट, मैं बहुत सारी चीजें प्लॉट करता हूँ अपने चार्ट पे, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन इंडेक्स। आप सबको पता है कि मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूँ मोस्टली, मैं स्टॉक्स पोजिशनली ट्रेड करता हूँ। और जब मैं इंडेक्स और स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या डालता हूँ अपने चार्ट पे? मेरे चार्ट पे प्रीवियस हाई प्लॉट होता है, प्रीवियस ओपन प्लॉट होता है, सिंपल पीवट यूज करता हूँ, R1, R2, उसके बाद में प्रीवियस क्लोज, मिडिल पॉइंट ऑफ अ प्रीवियस डे कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको प्लॉट करनी चाहिए ऑन योर चार्ट। मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट तो कोई भी लार्ज अगर कैंडल है, इफ देयर इज सम लार्ज कैंडल फॉर्मेशन, one thing which I have understood after trading for so many years is that जब तक कोई भी लार्ज कैंडल का 50% मार्क वायलेट नहीं होता है, तब तक नेक्स्ट डे इज लाइकली टू बी इन द डायरेक्शन। इनफैक्ट मैंने कितनी बार देखा है कि ऑन अ नेक्स्ट डे यू सी द मिडिल पॉइंट टेस्टिंग एंड उसके बाद में मार्केट गिर जाता है। आज भी देखिए मार्केट खुला, ये आज का चार्ट है एंड वी गोना बी वेरी लाइव एंड वेरी प्रैक्टिकल। ये आज का चार्ट है, मार्केट खुला, it went to middle point, it failed from there and it started drifting down. There was a lot of setups around here. I will show you और क्या चीजें थी। तो what I plot on my chart, मैं इंडेक्स का 3 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ ड्यूरिंग द डे। मैं उसके ऊपर मेरे चार्ट में प्रीवियस हाई, प्रीवियस ओपन, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस लो एंड मिडिल पॉइंट, ये सारी चीजें प्लॉट होती है। अलॉन्ग विद दैट सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल पिवट प्लॉट होते हैं, S1, S2, like this lines are plot। और ये सारी जो lines हैं इनका मैं कैसे यूज करता हूँ, that I will show you in some time। Along with the this stuff which is marked as a key level, I also have a this green line। ये जो green line आपने कई बार देखा होगा, मैं ट्विटर पे शेयर करता हूँ, I share it on my telegram channel। and the one thing which you always find on my index chart is VWAP। VWAP is nothing but an volume weighted average price। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसलिए जरूरी है, मैंने मेरे करियर में देखा है ट्रेडिंग ऑन इंस्टीट्यूशन साइड, इज दैट हाउ लार्जर इंस्टीट्यूशन यूजेस वीवैप फॉर ट्रेंड डिटर्मिनेशन फॉर द पर्टिकुलर डे। तो हम इसको बहुत डिटेल में डिसाइफर करेंगे इन कमिंग 1 आवर। एंड व्हाट वी विल ट्राई टू डू अलोंग विद दैट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सबसे पहली तो चीज, आप जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, मैं भी ट्रेडिंग भी यूज करता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू द लाइव ट्रेडिंग, स्पेशली विद द लार्ज stocks number and everything, entire FNO basket, I stick for more authenticated real time FNO data, because trading view real time FNO के डेटा नहीं देता है, तो मैं फाल्कन यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो देर आर इनफ इंडिकेटर्स अवेलेबल जो आपको अपने चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें प्लॉट करने में हेल्प करे। अमी ब्रोकर अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी सेम चीज आप कर सकते हो, विच इज यू कैन प्लॉट दी ऑल द प्रीवियस इम्पो। ये क्यों जरूरी है, आप एक चीज समझिए, अगर आप कोई भी चार्ट का कैंडल देखते हो, तो जब कोई चार्ट डायरेक्शनली मूव करता है तो आपने देखा होगा कि इस तरह की कुछ चीजें होती है। Now, in this thing, you see, every time when the market opens, it goes into the previous territory. Either वो previous close या middle point से fail होता है, और जैसे ही low टूटता है previous day का, you get a trending move। And as a trader, especially as a day trader, what we are interested is, हमारा मेजर मूव अगर क्लोज यहाँ पे था और ओपन यहाँ हुआ है, तो हमारा मेजर मूव तो ये क्लोज टू ओपन में आ चुका है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, आज के क्लोज से, आज के ओपन से क्लोज तक के बीच का हम डिफरेंस ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ट्रेड करने के लिए सिंपलेस्ट थिंग जो मैं यूज करता हूँ, ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर डेली में एवरी डे लोअर कैंडल बन रही है, तो जैसे ही लो टूटता है मुंह आता है, जैसे ही हाई टूटता है मुंह आता है। और जब आप अपने चार्ट के ऊपर हाई और लो मार्क रखते हो, आपको पता है कि हाँ, ऑल ऑफ अ सडन हाई टूटा है, ऑल ऑफ अ सडन लो टूटा है, दैट मीन्स द मार्केट फॉर द डे इज एक्चुअली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ डाउन इफ इट इज ब्रेकिंग लो, up if it is breaking high। so ये intuitively चीजें हम में नहीं आती है। तो when you plot this lines on your 3 minute 5 minute chart, especially on index, what happens is that you will be able to, you'll be able to understand where the market is moving। the reason I plot a VWAP, उसकी बहुत beautiful reasons है, and sometimes I will cover। fine, so this is the chart setup that I have for a
intraday, especially on index. Now, let us come to how I find the target when it comes to the intraday and especially in a stocks. So the one thing which I uses is the multiple Fibo clusters and retracement and expansion. अगर आपने हमारा previous webinar अच्छे से notice किया है, I have given a very detailed view on what is fib cluster, what is fib expansion, what is Fibonacci extension, what is Fibonacci retracement. तो when I'm talking about a cluster, सबसे पहले तो मैं आपको समझ दूं cluster का मतलब क्या होता है. तो एक डाउन मूव के बाद जब पुल बैक आता है तो दो चीज होती है. पहली चीज, ये जो अप मूव आया है इसका एक्सपेंशन. सो ये नीचे में कितना होगा. फिर ये जो डाउन मूव है, ये सपोज ये डिस्टेंस लेट्स से x था और ये जो पुल बैक आया वो आई था. तो यहां से यहां का अगर आप एक्सटेंशन नीचे करते हो तो व्हाट सॉर्ट ऑफ लेवल्स आर कमिंग. और ये जो पर्टिकुलर मूव है विच इज एक्स लो टू वाई हाई, इसको एक्सपैंड करते हो तो, और इन तीनों चीजों को जब आप कंबाइन करते हो यू गेट अ क्लस्टर ऑफ जोन विच इज कॉल्ड अ फिफ्थ क्लस्टर. तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मार्केट एक लेवल पे नहीं रुकता है, वो एक जोन ऑफ क्लस्टर होता है. बहुत क्रिटिकल जोन ऑफ क्लस्टर क्या होते हैं जहां पे सारे फिब लेवल मैच कर जाए. So one of the most used tool in my arsenal is I look for the fib cluster extensions के, fib cluster expansions के, fib cluster retracement के. फिर मैं उसको फाइन ट्यून करके लो टाइम फ्रेम पे यूज करने की कोशिश करता हूँ. बट जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे लेवल्स, ये 61.8 हो, ये 100% एक्सपेंशन हो, बहुत लार्ज डिग्री का सपोज यहाँ पे 38 रिट्रेसमेंट है, ये जो जोन होगा ये मेरा टारगेट बुकिंग जोन होगा. सेम चीज फॉर द अपर साइड. सो सपोज इफ द मार्केट वाज हियर एंड इफ यहां से मैं अगर इसको प्रोजेक्ट करता हूं अपसाइड में, एंड इफ माय अपसाइड टारगेट इज लेट्स से दिस इज 1.618, एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर मूव था, इस मूव का यहाँ पे 2.618 आ रहा है. एट द सेम टाइम कोई लार्जर मूव था यहाँ पे और उस लार्जर मूव का यहाँ पे 100% आ रहा है. तो ये जो तीनों बैंड बना, this cluster of band is what I look for the target and stop, level to look for. मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इंडसइंड बैंक में आई थिंक ऑन एयर मैंने 1300 रुपए में 500-600 रुपए का टारगेट दिया था, 800 रुपए में फिर वापस एंटर की थी. तो व्हाट आई वाज लुकिंग, हाउ आई हैव गिवन, आई विल शेयर दैट थिंग. सो लुक फॉर द फिब क्लस्टर, नॉट जस्ट अ वन फिबोनाची नंबर. बहुत सारे लोग रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, एक्सटेंशन यूज करते हैं, शायद एक्सपेंशन बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं. बट मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को कंबाइन करके यूज करने की कोशिश करता हूँ, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोअर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची है, मैं पर्सनली उनको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ. क्योंकि एक चीज समझिए, हायर द टाइम फ्रेम हायर द वेटेज. सो कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग का क्लस्टर है कंपेयर टू ऑन अ लोअर डिग्री, I would give more weightage to that particular thing which is daily or weekly. During the day, जब so suppose ये मेरा अप मूव था और ये लेवल निकल रहा है, लेट्स से अप मूव के लिए डेली में निकल रहा है, और इस पर्टिकुलर मूव का इस पर्टिकुलर, so when I'm talking about this particular up मूव का, let's say this one is a 0.618. So during the day, when this level breaks, my target is this. Along with that, what I would do is ये जो particular move है, इसका भी मैं expansion plot करूंगा. तो ये मेरा इंट्राडे का टारगेट बनता है और वहां पे मैं फिब क्लस्टर और पिवट क्लस्टर को मैच करने की कोशिश करता हूँ. अब थोड़ी देर में जब चार्ट देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं बोलने क्या चाह रहा हूँ. बट एक चीज, वर्ड ऑफ कॉशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु ट्रेड एक्चुअली यूजिंग द चार्ट्स एंड मैनुअल, आप ये समझिए, आपका जो इंट्राडे का टाइम फ्रेम है वो सारा का सारा डेली पे से आता है, और डेली में जब आप देखते हो यू आर लुकिंग फॉर अ टारगेट बेस्ड ऑन द फ्लिप क्लस्टर. सो नाउ दिस इज एन एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन. दिस इज अ चार्ट ऑफ इंडसइंड बैंक डेली. अभी फॉर सम रीजन द स्टॉक इज डिसमिसल एंड स्टॉक इज लुकिंग वेरी वीक लग रहा है. बट अब ये चीज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था. आई रिमेम्बर वेरी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे मैंने कहीं पे ऑन ए शॉर्ट दिया था on a budget day and my target was way below 800. So क्या था, तो ये एक स्विंग था, यहाँ पे bearish formation बना, फ्लैग. what I look for is ये जो डिस्टेंस था which was x, उसका ये जो पुल बैक आया, वो पुल बैक का 61.8, 100%
एंड 161%। एंड आप ये देखिए सारे टारगेट मैच कर गए। जब आपके पास जैसे ही ये लो टूटता है, यू हैव अ टारगेट ऑफ बिलो दिस नंबर, तो ये डेली हो गया। अब इसी चीज को जब आप लोअर टाइम फ्रेम में तो अगर मैं लेट मी जस्ट ओपन अ चार्ट सो दैट आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना ओपन, या okay fine, you guys are able to see my screen, which is this is the IndusInd Bank chart, और ये मैंने अभी fresh बनाया है before the presentation। तो मैं let me just remove everything from the chart for you to understand। अब देखिए, so ये जो है ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट यूज करता हूँ, और ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन इन माय ओपिनियन इन दिस पर्टिकुलर चार्ट वाज स्टॉक फेल एट 38.2% रिट्रेसमेंट। कोई भी स्टॉक अगर 38.2 पे फेल हो जाता है तो दैट मीन द स्टॉक इज वीक। along with that it has broken down a flag, तो 38.2 पे टूटा, फ्लैग बना, तो इसका जो टारगेट था ऑन अ पोजिशनल डिग्री वाज दिस मच। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं इस यहाँ पे दो चीज करता हूं, एक फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सपेंशन। तो ये जो मूव था उसका 261 हैज गिवन मी अ 942 टारगेट। नाउ यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। along with, so let me just use a pen for you to understand। so ये जो particular मूव था, इस मूव का 261 was this, 161, ये दो टारगेट थे मेरे पास। so the moment IndusInd Bank broke 1300, मेरा पहला टारगेट था about 1097 और दूसरा टारगेट था 942। अब इसको मैं तीसरी जगह कंफर्म कैसे करता हूं, तो along with the fib expansion what I also use is the fib extension। so let me just use a fib extension। और ये जो मूव था, इसका मूव अगर मैं नीचे में कंबाइन करता हूं, सो या ये जो मूव था इसका अगर मैं नीचे में कंबाइन करता हूं, तो माई 161.8 वाज अराउंड 700, माई 100% was around 949। so do you notice what I was trying to say? In this case my daily fib cluster was pointing 949 for the extension, which was equality target of the previous swing। my expansion was projecting a target of 942। आप समझ लो, 7 रुपए की बैंड में एक पुल बैक आना चाहिए था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, which was your 6th of March। it goes in the category, वो जाता है, it makes a precise low of, let me just open it, 914.8, 914 का लो बनाता है, which was in the zone of 948 and 942, और वहां से पुल बैक आता है। so this is how a fib cluster helps me। अब इस fib cluster को आप जब इंट्राडे में यूज करोगे तो आपको बहुत फाइनल चीज मिलेंगी। तो लेट मी जस्ट शो यू नाउ इंट्राडे चार्ट ऑफ IndusInd Bank। लेट मी जस्ट गो नाउ, ये है इंट्राडे पुलबैक्स इन द टारगेट। नाउ ये जो चार्ट है ये बहुत स्पेशल चार्ट है इन माय ओपिनियन, बिकॉज आई ट्रेडेड दिस चार्ट एंड ऑन एयर मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऑन एयर अराउंड दिस लेवल, मुझे बहुत अच्छे से पता है, अराउंड 855 ऑड लेवल आई गिव अ शॉट। तो क्या देखा था मैंने, तो ये देखिए, दिस वाज योर पर्टिकुलर फॉल, इट डिड अ पुल बैक विच इज 50% पुल बैक, और हमने ये 50% पुल बैक आया which was around this level, और ये 50% pullback से if you're taking an extension, if you're taking an extension of this, it gives you 160 61.8497। along with that ये वाला जो chart है, the one which I'm highlighting right now, in this particular chart इस मूव का डाउनसाइड में एक्सटेंशन 161 and 1 is was giving a 380 target। आज का लो है 380 बैंक। यू अंडरस्टैंड, दैट्स जस्ट अमेजिंग। जब आप फिब क्लस्टर्स को यूज करते हो कपल्ड विथ योर पोजिशनल, और इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज अ 10 मिनट चार्ट, दिस इज अ 60 मिनट चार्ट, और जो प्रीवियस चार्ट था दैट वाज दी डेली चार्ट। तो आपने क्या किया है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द थिंग्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपने इस केस में क्या किया है, आपने इस केस में ये जो पुल बैक था, या ये जो पुल बैक था, इस पुल बैक को 50% पे अगर शॉर्ट किया है,
एंड आई वुड टेल कि यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री भी कैसे बनेगी. शॉर्ट किया है, योर टारगेट विच वॉज कमिंग एट 1.618 विच वॉज कंबाइनिंग विद द टारगेट ऑफ द expansion. So what you're doing, you are just combining your levels on daily, hourly and on lower time frame. One more thing, जब मैं फिप क्लस्टर्स को यूज करता हूं, और सो फार वी हैव नॉट स्टार्टेड, हमने अभी तो ट्रेडिंग में नहीं, हम तो अभी फिलहाल आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं विच इज फिप क्लस्टर्स. फिप क्लस्टर में भी एक्सटेंशंस, रिट्रेसमेंट्स और एक्सपेंशन, इन तीनों को अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब आप कंबाइन करते हो तब आपको क्या निकल के आता है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हेन यू आर कंबाइनिंग द रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन टारगेट which is here, you are combining the expansion target which is here, you get a very final input. और आज के दिन में इंडसइंड बैंक में अगर आप देखेंगे तो it has taken exactly support at the pivot also. So when my expansion, retracement and extension all matches at the important support and resistance, so मतलब मेरे सारे जो important नंबर्स है अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मैच करते हैं, एक बार के लिए मैं वहां बुक करता हूं. कब तक? व्हेन आई डोंट गेट द नेक्स्ट एंट्री. So what I look for, अगर मुझे समराइज करना है, what I look for the weak stocks or the strong stocks. On that I look for the retracements on higher time frame. Lower time frame फिर मैं उसको extensions और expansion से टारगेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ. That is the setup which I use on a most of the time on the stocks. ठीक है. Now this is one of the concept that we are going to implement. When you trade a live you will understand how to implement that. Now let us understand the one more concept जो आपको इंडेक्स में बहुत heavily useful हो सकता है, वो है VWAP. आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो VWAP को ट्रेड करते हैं, और जब मैं VWAP के ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली you know intraday. VWAP is nothing but a volume weighted average price. और जब आप VWAP की बात कर रहे हो, in my opinion I have seen a lot of the fund managers doing the trade based on the volume weighted price. So this is how they give an order to dealer. तो institution side में है, अगर मुझे आज 10 लाख शेयर इंडसइंड बैंक शेयर शॉर्ट करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आज के दिन में मुझे VWAP से 1% ऊपर नीचे में इंडसइंड बैंक 10 लाख शॉर्ट करना है. दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर दे गिव टू द इंस्टीट्यूशनल डीलर. नाउ इंस्टीट्यूशनल डीलर जॉब इज टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम कहाँ हो रहा है और एवरेज प्राइस क्या है. तो अगर आज के दिन का VWAP यहाँ है और सपोज प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है, वो ही विल शॉर्ट, अगर वो यहाँ आ जाएगा तो ऑल ऑफ अ सडन ही विल कैलकुलेट कि वो कितना है, ही विल स्टार्ट शॉर्टिंग, तो VWAP ऑटोमेटिकली विल शिफ्ट डाउन. तो इस तरह से क्या होता है, ऑन अ ट्रेंड डे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंड डे, इंट्राडे, VWAP धीरे 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 करके नीचे आता है इन अ डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू एन इंस्टीट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम, लार्ज इंस्टीट्यूशन जो बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे VWAP से इतना शॉर्ट चाहिए, या मुझे आज के क्लोज से इतना शॉर्ट चाहिए, या मुझे VWAP के डिस्टेंस से इतना शॉर्ट चाहिए. सो द रीजन व्हाई VWAP वर्क्स लाइक चार्म इज बिकॉज real volumes happen there. That is where most of the people would look to buy and sell, because उनको आज के दिन का एवरेज प्राइस अराउंड दोज लेवल्स चाहिए. Okay, now one more thing is that it's a very essential for the future trader, because futures में हमारे पास open interest होता है, and along with that what I have realized is that futures relative to the equities gives you a better calculation of the VWAP, because of the fact that फ्यूचर के अंदर में जो ट्रेडिंग हो रहा है उसके अंदर आपके पास ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर है. सो व्हेन यू प्लॉट अ VWAP एंड ओपन इंटरेस्ट यू गेट अ बेटर इंडिकेशन व्हिच विल आई विल शो यू. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूजेस VWAP बिकॉज उनको लार्ज क्वांटिटी करनी है, सो वो एक प्राइस से अपना एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं. वो क्या बोलेंगे, अगले 4 दिन तक इंडसइंड बैंक VWAP से मेरा शॉर्ट कर दे. सो अब डीलर का काम ये है कि आज के दिन में उसको VWAP कैलकुलेट करना है और वहां पे शॉर्ट करना है. व्हेनेवर द इट मूव्स अवे फ्रॉम द VWAP दे हैव टू रीबैलेंस. नाउ VWAP के 3 सेटअप होते हैं जो मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं, एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट सेटअप वन बाय वन, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडेक्स व्हिच आई यूज इट अ लॉट. सिंपल सेटअप व्हिच इज द ब्रेक ऑफ VWAP. When you're talking about a VWAP, you're talking about most of the time directional move if the VWAP is break. So अगर trend is clear and if the day
is going to be sharp in one side, you're looking for a break of a VWAP, और जब break of a VWAP होता है तो trending move आता है. Another setup which I have seen works very well is the pullback of the VWAP. This works charming in the index. और अगर आप इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ट्रेडर हो, आपको समझ में आएगा पुल बैक टू वीवेप इज अ सेटअप जो आपको बहुत क्लोजली फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अभी जब इंडेक्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस में काम हो रहा है, बहुत ज्यादा यू नो हेवीली राइटिंग हो रही है, बहुत हाई आई हुई है. द पुल बैक टू वीवेप इज सेटअप व्हिच वर्क्स लाइक अ charm. Now on a non-trending day, most of the time prices fluctuates around the VWAP, और जब जब ये होता है, जब it oscillates around the VWAP like this, there is going to be one thing which I'm like 95% of the sure is that it forms some pattern. So your job as a future trader is not only look for the VWAP, but your job is to also look for what sort of VWAP setup is doing in last 3 days, 4 days, what it is doing today. और मैं the way I traded morning के setup में VWAP का इतना मैं importance नहीं देता हूँ जितना मैं mid of the session या towards close setup में देता हूँ. But I have seen that during the mid अगर VWAP test करके fail हो जाता है, and if it pullbacks to VWAP, and if it fails, I am looking for aggressive in that particular direction, जो मैं भी आपको बताऊंगा. So let us look at the first setup, which is the test of VWAP and gone. तो ये जो चार्ट है, ये टिपिकल मेरा चार्ट सेटअप होता है जो मैंने आपको बताया है. इट्स अ लाइव एग्जांपल. दिस इज अ टुडेज बैंक निफ्टी एग्जांपल, एंड हाउ टुडेज बैंक निफ्टी एग्जांपल वाज अ परफेक्ट केस फॉर टेस्ट टू VWAP and short. Okay, so let me show you what has actually happened. So market opened, it went to the midpoint of the previous day, it failed, and after that it was constantly, और ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक में, it was constantly falling. आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे जो कैंडल साइज था वो रिलेटिव स्मॉलर था, जो कैंडल साइज था वो रिलेटिवली स्मॉलर था, एंड इट वाज जस्ट टेस्टिंग दी VWAP and it was falling. Finally around the S1, आप देख रहे हो, that is the reason I use the pivot. Finally around the S1 it formed a small doji, it pulled back to VWAP and it formed an engulfing bear candle. So let me just zoom it a bit. आप देखिए यहाँ पे at this particular let me just zoom out. Yeah, okay, so just look at today prices open, it failed at the middle point 20,239. It failed at 22,239. It started drifting down, constant test of VWAP around the first support 21,435. एग्जैक्टली वहां पर डबल बॉटम बनाया, इट पुश्ड बैक टू दी VWAP. जब वो VWAP पे गया तो 5 मिनट के चार्ट पे एंगल्फिंग बेयर बना. नाउ व्हाई दिस सेटअप इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू. ओके, ये मॉर्निंग का प्राइस है, ये तो गिर रहा है, टेस्ट हुआ, ये देखिए ये जो क्लस्टर था, यही क्लस्टर में इसने स्विंग हाई बनाया. तो नाउ लेट मी जूम अगेन फॉर यू. तो आप देखेंगे इन सब का जो लो था वही इस कैंडल का हाई हुआ, वहां पे फेल हुआ, वहीं पे प्राइस टेस्ट हुआ VWAP को, एंगल्फिंग बेयर बना एंड इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग. तो आज के दिन में सिंपल शॉट फॉर यू, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग. Simple short for you when this low was broken, stop loss above previous low which was 21,840, and you had to ride it. I will show you how to do that thing also. Along with that, the one more thing you're seeing in my chart over here is how I have placed the way I do, and that is what in my opinion I have not seen a lot of people doing that so far. मैं क्या करता हूँ, अपने चार्ट के ऊपर वॉल्यूम के ही ऊपर ओपन इंटरेस्ट प्लॉट करता हूँ. And this I'm doing since last, I think, I don't know, 10-12 साल से मेरा यही सेटअप रहता है. वॉल्यूम के ऊपर हमेशा आप वेब प्लॉट करते हो, तो सॉरी वॉल्यूम के ऊपर ओपन इंटरेस्ट प्लॉट करते हो. उससे क्या हो जाता है, लेट मी जस्ट शो यू. उससे ये होता है कि देखिए जब वॉल्यूम गिर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे OI भी बढ़ रहा है. तो दैट मीन्स अलोंग द डे शॉर्ट्स बिल्ट अप इन द प्राइसेस रैली. तो अगर आपका यहाँ एंट्री आया होता 21,400 में, वहां से ऑलमोस्ट 21,200 तक गया, यू रोड अबाउट 1,000 पॉइंट इन बैंक निफ्टी, जस्ट अ सिंपल टेस्ट ऑफ VWAP.
Am I making sense, guys? Are you able to understand what am I saying? You may reply using a yes or no. Thank you so much, guys. Thank you so much. So in this particular setup, the thing which I was trying to show you was how a weak index test previous candle's middle point, makes couple of attempts in the morning itself to move above the VWAP, fails, takes a support at first pivot, pullbacks to VWAP, form engulfing bear candle and fails. This happens every day. This happens every day. All you need is keen eye कि ये कब होता है और इसको कैसे ट्रेड करना है. एंड द वे आई ट्रेड, मैं बहुत ज़्यादा इंडेक्स के ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ और स्पेशली इंडेक्स के जो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ यूजिंग स्प्रेड ट्रेड करता हूँ. तो अगर ड्यूरिंग द डे मुझे वीवेब पे वीक स्टॉक में इस तरह का सेटअप दिखता है, आई वुड लुक टू क्रिएट अ लॉन्ग पुट या पुट स्प्रेड या शॉर्ट क्रेडिट कॉल स्प्रेड. इस केस में क्योंकि हम इंट्राडे फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, हम सिंपल सा एक फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अबव प्रीवियस लो, या फिर आप मिडिल पॉइंट का भी स्टॉप रख के शॉर्ट कर सकते हैं. हाउ टू राइट दैट, वी विल सी दैट इन सम टाइम. तो क्या किया है मैंने, सिंपल प्राइस, वीवेप, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इन तीन चार चीजों को मिक्स करके हमने अभी तक सिंपल बैंक निफ्टी का आज के दिन का 1000 पॉइंट, और ये रोज होता है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेटअप इज दिस एवरीडे हैपेंस. आपको बस खाली ये एस्टैब्लिश करना है कि इनहेरेंट ट्रेंड क्या है. यू हैव टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो एक और चीज मैं नोटिस करता हूँ ऐसे सेटअप्स के अंदर, कि आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं. Your stop losses are very small. Now let us look at one more setup, which is oscillations, or for that matter break of a VWAP. तो ये देखिए, this is a chart of a Nifty now, और ये निफ्टी के 11300 का सेटअप है. तो आप देखिए कि किस तरह से VWAP has worked up fantastic. Okay, first of all, prices have fallen, it did a pullback. This is exactly 0.618 of the previous move. We will see that. कहाँ आता है, विवेक ब्रेक करता है, ये स्विंग हाई का स्टॉप, मार्केट गॉन. देन इस दिन का अगर आप पीरियड देखेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि इट इज ट्रेडिंग. वन मोर सेटअप, देन इट ऑसिलेट्स अराउंड द वीवेप. सो ये पर्टिकुलर डे में आपका एक सेटअप ये होता था, और उसके बाद में जब ये यहाँ पे फेल होता है, इट इज नीदर ब्रेकिंग लोज और नीदर ब्रेकिंग हाई. सो देखिए, एक चीज जो मैं प्रीवियस सेटअप में आपको बताऊंगा, वीवेक टूटने के बाद इमीडिएटली ये स्विंग टूटता है, तो दैट इज हाउ योर सेटअप इज. यहाँ पे वीवेक टूटा, ये दिस वाज योर स्टॉप लॉस एंड दैट्स हाउ योर ट्रेडिंग. यहाँ पे वीवेक टूटा, आपका स्टॉप लॉस ये है. बट देन इफ इट ऑसिलेट्स अराउंड द वीवेक, you think that this is not the kind of a trend which you are looking for. You come at the next day, market opens, flirts around the VWAP. After that, it bounces back to VWAP. Now you see it's a half day, and by this time open interest has risen. It goes to the VWAP, यहाँ पे आता है, और यहाँ पे बहुत ही beautiful candlestick pattern बनाता है, जो second time बना है. Let me just highlight a bit for you. So let me just zoom it a bit. Over here, in this particular case, yeah, this falls. After this fall, let me just change the ink color. After this fall, market pull back, and once it breaks the view, यहाँ पे देखिए long shadow. अगर आपने candlestick पढ़ा है, and one book I would like to recommend you all for the candlestick is that Steve Nissen Japanese Candlesticks. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो you can read that. That's a fantastic book. And another book which works fantastic with the VWAP is the Greg Morris Candlestick Explained. तो यहाँ पे VWAP पे fail हुआ, it falls, it comes back to VWAP, similar sort of a doji candle, break of a pattern and gone. So from 11,300 it goes to almost 11,000, which is like a 300 point. अब एक चीज समझिए गाइस, दिस एक सिस्टम और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट ऑफ वीवेप एंड फेल, ये एवरीडे बनता है.
आपको ये समझना है कि इनहेरेंट ट्रेंड क्या है, यू हैव टू कंबाइन। तो ये पूरे जब ये पीवीएफ को पुल बैक कर रहा था तब ओपन इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, जब ये टेस्ट हुआ तो उसके बाद में खट से टूटा, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। अब ये पुल बैक के अंदर में you see the OI is declining, so that means whoever the short was declining the position. As a day trader, your single job is where the positions are building and who is in the stronger hand. और क्योंकि ये लार्जर ट्रेंड के बाद गिर रहा था, तो आई वाज ओनली लुकिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रेड्स, I would have missed this up trend. I would have not traded that. The kind of trader that I am, I would have traded this short or probably this short. ये longs मैंने शायद नहीं किए होते, शायद मैंने एग्जिट कर लिया होता। क्यों? क्योंकि मेरा इनहेरेंट बायस वीक था, मेरा इनहेरेंट व्यू वीक था। नाउ लेट अस लुक एट द वन मोर सेटअप ऑफ अ वीवेब, एंड यू वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज कि ये जो सेटअप है ये कितना सिंपल सा सेटअप है। ये सेटअप है यस्टरडेज, और ये देखिए कल के दिन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हाँ ये कल के दिन का सेटअप है 23/200, यस एग्जैक्टली ये कल का सेटअप है। व्हाइल बैक आई वाज जस्ट टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, दैट्स व्हाई a lot of people have given me feedback कि include lot of charts। तो देखिए मार्केट ओपन हुआ, गया, and then throughout the day it oscillates around the VWAP। अब जो मैंने आपको कहा था कि whenever you oscillates around the VWAP, तो अगर ये आप VWAP है, अगर आप इसके अराउंड में ऑसिलेट होते हो और अगर ट्रेंड वीक है एंड इफ देयर इज अ पैटर्न ब्रेक, सो इन दिस केस आपको दिख रहा है, अगर लेट मी जस्ट मेक इट अगेन, या यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये टेस्ट ऑफ वीवेब था और आपने शायद ब्रेक ऑफ वीवेब शॉट नहीं किया था, पर जब ये ट्रायंगल शॉट टूटा with stop loss of previous open 23,193, you would have initiated your position at 22,900 and you would have, wow, 1,000 point rally। फिर से मैं समझाता हूं, तीन सेटअप होते हैं वीवेब के, एक टेस्ट ऑफ वीवेब, एक ब्रेक ऑफ वीवेब और दूसरा तीसरा होता है ऑसिलेशंस ऑफ वीवेब। जब आप वीवेब की बात कर रहे हो और उसमें भी जब आप टेस्ट ऑफ वीवेब की बात कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, इनहेरेंट वीक, टेस्ट, दो तीन, एंड इट्स गॉन। In a second thing, your wave breaks in a trend, and then third setup wave के around में oscillations होता है। Whenever oscillation happens, in my opinion, like 60 to 70% of the time it forms a pattern। This is the simplest of the simple triangle pattern, b wave breaks, triangle breaks, this is where you take a, और at the max आपने क्या किया होता, ये swing low पे लिया होता, your stop loss would have been of a v wave। अगर आपने यहाँ एंट्री किया होता, let me just highlight, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होता, your stop loss would have been this swing high। अगर आपने इस स्विंग लो पे एंट्री किया होता, इस स्विंग लो पे, your stop loss would have been VWAP and you just had to write it। और अब देखिए यहाँ पे पोजीशन में ओपन इंटरेस्ट कैसे हुआ, ये पूरे कंसोलिडेशन में OI राइज हुआ and the moment it started breaking, the OI started declining। What it means, during the day probably longs would have added expecting some sort of pullback, and when market started drifting down, those all people caught on the wrong horse। Simplest setup, it works like a charm in a nifty and bank nifty। बैंक निफ्टी में बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है बिकॉज बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, ट्रेंडिंग है। बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह से सेटअप्स आते हैं उसमें टेस्ट एंड ऑसिलेशंस ऑफ वीवेप्स आर माय फेवरेट सेटअप। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और जब आप यहाँ पे OI ऐड करते हो वॉल्यूम के अंदर, यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो OI का स्केल है वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। और प्राइस के ऊपर आप सिंपल वीएफ डालिए, आपको ट्रेड ये करना है, जो भी डायरेक्शन हो मार्केट का, उस डायरेक्शन ऑफ मार्केट में यू हैव टू क्रिएट दी, यू हैव टू क्रिएट दी, यू हैव टू क्रिएट दी डायरेक्शनल सेटअप। Am I making sense, guys? Simple index setup, 5 minute chart, VWAP, open interest and some candles। अब इसको इसको हम बहुत ज्यादा फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, यूजिंग अ फ्यू इंडिकेटर्स व्हिच आई यूज इन माय पर्सनल थिंग। So far so clear, any doubt, guys?
It seems it was a. It seems there is no question, I guess. Yeah, so far. So let me continue further. Wow. Just a minute. Let me just go through the questions. Fine. So there are some questions coming up. Let me just, yeah. So Vinay Kumar is asking, how can we say that it will oscillate or it may not? How to confirm? That's a good question, Vinay. Okay, so you have to understand that whenever it oscillates, it is not going to break any swing lows, you know. So in this particular example, when you're talking about an VWAP oscillation setup, let me just highlight a bit. It has neither break this low nor this low. And after that, wo, okay, so one of the simplest way I have realized is that you use a average move. So on an average move, 5 minute chart ke upar, you are getting is about, let's say, 100 point of a 5 minute candle. If lesser than that move comes after the weaver, then you should understand that it is going to oscillate. Okay, that was Vinay's answer. Let me just take up a more. Yes, Jay, you have to use. Jay Dave is asking, we need to use 5 minute chart for intraday. Jay, in the case of Bank Nifty, we use 5 minute or 3 minute. 5 minute is my preferred when the day are trending and clear. Raghu is asking what is a VWAP parameter. VWAP doesn't have a parameter, Raghu. What you do is you plot a VWAP using. We will plot a VWAP in some time, so you will understand. कि VWAP अगर आप plot करते हो chart के ऊपर, what will happen is that it just calculates the volume weighted average price and it just plots. Yes, Dhananjay Shalunke is asking, MP middle price is of previous day candle. Yes, it's a previous day midpoint. Trust me, it's a very simple, but I have not seen a lot of people using. Previous day midpoints are the best way. I will show you in the chart that how many time it happens कि वो previous day midpoint पे जाता है और वहीं से गिर जाता है. We will Sanath Kumar is asking, how do you scan the stock? I will talk about. We have not gone. We are still the first hour of a webinar, and I have just shared the one setup, which is VWAP. I will share the one of the very good trading system which I use it for the directional stock. Amit is asking how to connect VWAP with oscillation. See, my experience says कि अगर average move छोटे आ रहे हैं candles के, and if it is coming back for VWAP, then and it is not neither breaking days high days low, it is a sort of a setup which you are looking for a. and एक और चीज आपको देखनी है, आपका वीवेब का वैल्यू कितना है, वीवेब फ्लैट है क्या. देखिए, when this market started falling, all of a sudden वीवेब also started falling. आपको ये समझना है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो प्राइस वॉल्यूम से नीचे आ रही है कि नहीं है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू. And yes, Pawan Kumar is asking, is this work in Nifty future? Yes, it works in Nifty future also. It works everywhere. But आपको एक चीज समझनी है. uh, Ansh Agra is asking, instead of VWAP, can we use instead of a middle point of a previous day, can we use VWAP? आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर इट्स अ प्योर कैंडलस्टिक्स. लेट मी जस्ट ओपन अ चार्ट ऑफ समथिंग. ओके गाइस, ये चार्ट है, आपको दिख रहा है, और ये चार्ट है इंडसइंड बैंक का. ठीक है, सो लेट मी जस्ट फाइन. सो इस केस में मैं टाटा स्टील कर देता हूं. आप देखिए इस चार्ट में कितनी बार इस चार्ट में every time it falls it tests the previous day's candle midpoint. And in fact there are times when it does not. In fact bull market में भी देखिए,
सो ये सिंपल नेचर ऑफ द मार्केट है, ये मेरा खुद का फाइंडिंग नहीं है। आप देखेंगे तो हर कैंडल, सो इसका सिंपल एनालिसिस मैंने कैसे किया था, जब मैं कैंडलस्टिक चार्ट को देखता हूँ, हर बार दूसरे दिन की कैंडल है वो प्रीवियस दिन की रेंज में आती है, कहीं पे सपोर्ट लेती है या रेजिस्टेंस लेती है और भाग जाती है। और एक चीज समझिए आप, जब आप इस चीज की स्कैनिंग कर रहे हो, आपको उस चार्ट को देखना है। अभी सपोज रिसेंटली बहुत सारे फॉल आए थे, जिसमें से सबसे एक ज्यादा फॉल आया था, वो इक्विटास का था। अब ये देखिए, इक्विटास का ये दिन देखिए, मिडिल पॉइंट, इस दिन देखिए, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर तक गया था, अगेन मिडिल पॉइंट। आप समझिए, ये सिंपल नेचर ऑफ द मार्केट है। नेचर ऑफ द मार्केट क्या है? नेचर ऑफ द मार्केट ये है, कोई भी वीक स्टॉक, यू नो कोई भी वीक स्टॉक अपने प्रीवियस डे की रेंज में जाता है, जो सेलर था वो वहां कंट्रोल में है, ही विल कम एंड ही विल थ्रेश द प्राइसेस डाउन। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेटअप। तो वीवेप की जगह मैं मिड पॉइंट यूज इसलिए करता हूं क्योंकि इट हैज हेल्प मी, बट आप कुछ भी यूज करिए, द आइडिया हियर इज प्रीवियस डे की रेंज को आप कैसे यूज करना चाहोगे। खुशबू इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ कैंडलस्टिक बुक, आई वुड से Japanese stick candlestick by Steve Nyson. Um, my team will reply. Pranay, can you please reply to all the participant? Name of the book: Japanese stick candlestick by Steve Nyson, and Greg Morris candlestick explained by the Steve Nyson. This will improve your trading like 1,000 miles. And in future I am thinking to take a webinar on the candlestick. उस वक्त आप ये सारे कंसेप्ट को जब क्लब करेंगे, शायद अगर आपका कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मेरा है, तो भी आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द कैंडल व्हिच आई डू, candlestick is nothing but a imbalance of the buyer and seller. Fine, I have managed to ask most of the question. Khushbu is asking question. Please explain fib cluster with one more example. Khushbu, we'll take the example in some time. Let me just cover a presentation. We are halfway to presentation, 1 hour, and we have to cover some more. Team, kindly answer some of the questions which you can answer. Meanwhile, let me go through the presentation. Fine. So now let us talk about the momentum indicator. This happens to be the momentum intraday future webinar, and we are talking about a fib clusters. We are talking about a VWAP. Now, what sort of momentum indicator I would use when I would, use the intraday? So first of all, you have to understand that मेरे जो personal setups के अंदर मैं चीजें यूज करता हूँ, मैं दो तरह के oscillator यूज करता हूँ, which is bounded एंड अनबाउंडेड। इन दोनों को मैं अनकोरिलेटेड कैटेगरी में डालता हूं। सो वेदर यू आर यूजिंग मोमेंटम आरओसी, momentum is unbounded oscillator, ROC is rate of change is again unbounded, whereas RSI is a bounded oscillator. RSI एक रेंज में होता है। मूविंग एवरेज crossover is again a signal, but I use it in some different way. I'll show you. Stochastic again is a bounded oscillator. MACD is अनबाउंडेड ऑसिलेटर। तो आप दो ऑसिलेटर्स का यूज करिए, लेकिन आप MACD और स्टोकेस्टिक यूज नहीं कर सकते, सॉरी RSI और स्टोकेस्टिक यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज RSI एंड स्टोकेस्टिक अगर आपको यूज करना है तो आपके लिए RSI और स्टोकेस्टिक अगर आपको यूज करना है तो आपके लिए एक चीज समझनी होगी कि वो दोनों बाउंडेड ऑसिलेटर ही है। So you have to use something which is unbounded oscillator. तो इस कैटेगरी में I have included unbounded and bounded oscillator. मेरा जो पर्सनल सेटअप रहता है, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, उसमें मैंने MACD, RSI और one of the most interesting oscillator the way I use is the EDX, right? So एक चीज आपको समझनी है कि जब आप इंडिकेटर्स को क्लब करते हो तो आपको उनका टाइप भी समझना होगा कि वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। One more thing is that don't use the same type of indicator on your chart. मतलब RSI और stochastic मत यूज करिए, या फिर MACD और momentum मत यूज करिए. Both will give you more or less similar type of a result the way I have analyzed. Fine. Now, when you're talking about stocks and especially the intraday और index intraday, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि
मेजर ऑफ द मूव, अगर आपको बहुत कंसिस्टेंट पैसा कमाना है तो फर्स्ट आवर और लास्ट आवर ये आपको ट्रेड करना है। मोस्ट ऑफ द मूव्स हैपन इन द फर्स्ट आवर एंड लास्ट आवर। ड्यूरिंग द डे जो मूव होते हैं वो मूव के सेटअप्स होते हैं और उसके लिए आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बट इन माय ओपिनियन ट्रेंड ऐसे होता है, फिर चॉप होता है, फिर ऐसे होता है, एंड ड्यूरिंग लास्ट यू गेट द फॉल और पुल बैक। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो मोस्ट लिक्विडिटी रिमेन इन द फर्स्ट आवर एंड द लास्ट आवर, वो हमेशा समझना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि 1 o'clock फैक्टर इन आवर मार्केट वर्क्स लाइक एनीथिंग। व्हाट इज 1 o'clock फैक्टर? सबसे पहले ओपन होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन एशिया, एशिया के अंदर जापान, फिर सिंगापुर, देन इंडिया। उसके बाद में ओपन होता है यूरोप, लंदन, जर्मनी, डेक्स, फित्सी, कैक। उसके बाद में ओपन होता है यूएस। अब ये जो है ये ग्लोबल करेंसी साइकिल है या ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस है, साइकिल है। और इसमें वाई 1 o'clock फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट 1 o'clock फैक्टर पे क्या होता है, यू हैव एशिया विच इज क्लोज एंड यूरोप सेशन स्टार्ट होता है, एंड वी टेक क्यू कि भाई एशिया क्या क्लोज हुआ था और अब यूरोप क्या ओपन होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली वी शेप अप आवर ट्रेंड डिपेंडिंग ऑन आवर opening and closing. And these days we are focusing a lot on our Dow futures in order to take a view for the Q for the US Open. So एक चीज आपको याद रखनी है कि first hour and last hour momentum trading, especially in the case of future, works very good. Now let us understand कि क्या होता है. So here is an example of a bank nifty. अब देखिए मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया है और मैंने दो चार्ट पिकअप किए हैं, यू वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज कि दोनों चार्ट का एक्चुअल मूव है स्टार्टेड पोस्ट वन। तो देखिए ये 1 PM है, स्टॉक इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा था, इंडेक्स पूरा दिन। 1 PM होता है एंड आफ्टर दैट द ट्रेंड स्टार्ट्स। दिस इज अनदर चार्ट ऑफ व्हेन द इंडेक्स वाज अराउंड 25,000 ऑड, मार्केट पुल बैक कर रहा है एग्जैक्टली अराउंड द 1 o'clock, इट फॉर्म्स सम पैटर्न, इट फेज अ वीवेप। क्या हुआ था वी विल सी दैट, एंड इट ब्रेक्स डाउन। सो यू सी ट्रेंड कुछ नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन 1 o'clock यू गेट अ वीवेप। ट्रेंड कुछ नहीं था, यू गेट अ वीवेप। सो ये फर्स्ट आवर था और ये आपका लास्ट आवर है, ये फर्स्ट आवर था और ये आपका लास्ट आवर है। तो अगर आप बहुत अच्छा डे ट्रेड करना चाहते हो, यू नो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर मैक्सिमम your 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 maximum focus should be on the first hour and the last hour. क्यों? क्योंकि by the time Europe is open, US is giving indication and Asia is almost closed. So अब बड़े बड़े जो institution है, most of the institution they come, you know, so there is a saying that open is by amateur and the close is by the mature trader, you know. So 1 o'clock market tops out, 1 o'clock market tops out, and especially ये मेरा experience रहा है based on 2008 trading also. After 1 o'clock a real trend starts, whether it is selling or a buying. तो अगर आप trader हो and if you are looking for a day trade, you should have a setups which gives you an edge, and you should think of looking for clear signal post 1 o'clock. So this is one thing which you should keep in mind when you're trading a momentum. Uh, Before we move further, one thing which I would like you to highlight is that when whenever I look to trade index or stocks, you know, I give always weightage to higher time frame, one. Second thing, इंट्राडे के लिए इंडेक्स के लिए 3 मिनट या 5 मिनट यूज करिए आप, ठीक है। और स्टॉक्स में आई नेवर प्रिफर टू गो बिलो 15 मिनट, नेवर एवर। my most of the focus is on the higher time frame। तो स्टॉक्स में आर्ली और 30 मिनट ये मेरे कॉम्बिनेशन रहते हैं, coupled with the daily। I will show you in some time मैं कैसे यूज करता हूँ everything, but daily आर्ली 30 मिनट दिस इज मैक्स। मैं डेली को फाइन ट्यून 30 मिनट में करता हूँ स्टॉक्स में, और इंडेक्स को मैं 3 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है कि आपके चार्ट के ऊपर आप स्टॉक के केस में 15 मिनट से नीचे नहीं जाओगे, और इंडेक्स इंट्राडे ट्रेड करना है फ्यूचर में तो 3 मिनट और 5 मिनट का यूज करोगे विद द सेटअप्स व्हिच आई हैव शोन यू। फाइन। नाउ व्हाट आई हैव ऑन माय चार्ट
व्हेन आई एम ट्रेडिंग। तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक, तो मेरे पे वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट प्लॉटेड ऑन वॉल्यूम, RSI 14, MACD डिफॉल्ट पैरामीटर जो भी है 926.9 या 924.9 जो भी है, एंड ADX के डिफॉल्ट पैरामीटर। दिस इज द कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव ऑन माय स्टॉक चार्ट। व्हेन आई एम ट्रेडिंग index, I look for these things. VWAP, a must have on an index chart. Volume and open interest in a single panel. अगर आपने ये मेरा प्रीवियस चार्ट देखा है, ये देखिए, दिस इज अ प्राइस, दिस इज VWAP, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज ओपन इंटरेस्ट। सो जब मैं इंडेक्स को ट्रेड कर रहा होता हूं, तो मेरे चार्ट के ऊपर VWAP होता है, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट सिंगल पैन में होता है, एंड आई डेफिनेटली यूज द पीवट एंड अदर लेवल्स। आपको लगेगा ये कितना सिंपल है, बट ट्रस्ट मी गाइस, द सिंपलेस्ट थिंग वर्क्स लाइक चार्म। अगर आप सिंपल पीवट यूज करते हो अलोंग विद प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, मिड पॉइंट, इट वर्क्स। और फिर मैं इंडेक्स ऑप्शन चेन को भी यूज करता हूँ, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑप्शन इंट्राडे वेबिनार, जहां पे हम उसको बहुत इन डेप्थ कवर करेंगे। फाइन। वन मोर सेटअप विच आई वुड लाइक यू टू फोकस is the stocks, कैंडल्स एंड पिवट। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं। देखिए, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि कैंडल स्टिक इज द सिंपलेस्ट वे टू एनालाइज द प्राइसेस, और जब आप उसको पीवट के साथ कंबाइन करते हो, स्पेशली ऑन द टाइम फ्रेम विच इज हायर टाइम फ्रेम, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी फाइनर एंट्री। सो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए पिवट्स और कैंडल्स का यूज करता हूं। कैसे? लेट मी शो यू। सो I'm looking for major weak and strong stocks. So positionally, मेरे पास जब स्टॉक आ जाते हैं, something which is strong or something which is weak, I am looking to fine tune that on a lower time frame. मेरे चार्ट पे हमेशा इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर देता हूँ। सो लेट्स से मेरा व्यू था इंडसइंड बैंक बेरिश है, तो मेरे चार्ट के ऊपर फिफ्थ क्लस्टर मार्क हो गया होगा कि जहां पर सपोर्ट था। मेरे चार्ट के ऊपर सर्टेन गैप लेवल मार्क हो गया होगा। मेरे चार्ट के ऊपर सर्टेन पीवट मार्क हो गया होगा। और पीवट में भी व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द फेलियर ऑफ पीवट विद अ वीक कैंडल, एंड अगर वहां पे पैटर्न है तो इट गिव्स एन एडेड एडवांटेज। सो लेट मी रिपीट अगेन सो दैट आपको समझ में आए कि स्टॉक्स, कैंडल्स और पीवट, ये तीन चीज को जब आप कंबाइन करते हो, जब आप तीन चीज को कंबाइन करते हो, तो क्या निकल के आता है? तो यू आर लुकिंग फॉर अ स्टॉक विच आर वीक और विच आर स्ट्रॉन्ग, देन यू हैव ऑलवेज मार्क द इंपॉर्टेंट जोन ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो आपके पास हमेशा दो टाइम पेन खुली होनी चाहिए चार्ट की। इनफैक्ट मैं तो तीन पेन खुली रखता हूँ। आई विल शो यू द वे मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट विच आई यूज। दिस इज योर डेली एंड दिस probably hourly or a 30-minute. You have marked zones which is important, and the same zone is marked in intraday also. Now you are looking for a pullback to that zone or a support to that zone. We'll see in a chart. अब जब वो pullback और resistance पे जाए, then you are looking for a weak candle. Which are the weak candle? Hammer, engulfing bear, dojis, gravestone dojis. Those are all weak candle. Strong candle accordingly observe. तो अगर आपको कैंडल समझ में आता है, आप उसको पीवट और रेंज के साथ कंबाइन करेंगे, तो इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट। एंड द लास्ट थिंग व्हाट आई डू इज, इफ देयर इज अ पैटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, सो लेट अस लुक एट द चार्ट। दिस इज द चार्ट ऑफ अ एनएमडीसी। देखिए, ये एनएमडीसी का 30 मिनट का चार्ट है। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट। ये देखिए, मेरा व्यू लार्जर बेरिश ही था स्टॉक के ऊपर, और अब देखिए 3 दिन से स्टॉक यही रेंज में आके फेल हो रहा था। नाउ प्रीवियस हाई यहीं पे था। यू सी हाउ दिस पीवट्स आर हेल्पिंग। तो जब मैं पीवट हाई ओपन करता हूं यहाँ पे, तो मेरा प्रीवियस हाई 7865 का था, वहां पे गया, एक बार फेल, दो बार फेल। One more thing which was happening around this level was this. ये एनएमडीसी का चार्ट है, और एनएमडीसी के चार्ट पे मैंने यहाँ पे गैप लेवल मार्क किया है। दिख रहा है? तो एनएमडीसी पुल बैक्स टू दिस चार्ट, गैप है, और यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखिए गाइस। लुक एट द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। दिस कैंडल is your hammer, this candle is a long shadow, and it goes today there, आज गया,
आज एनएमडीसी एग्जैक्टली वहां गया, वहां से सेल ऑफ आया। लेट अस लुक एट द एनएमडीसी का आज का हाई लो देखने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट ओपन एनएमडीसी का। सो ये एनएमडीसी है और ये डेरिवेटिव्स है। एक्चुअली मुझे नई वेबसाइट में कुछ समझ में नहीं आता है। लेट्स ओपन एनएमडीसी फ्यूचर। Look at today's high in NMDC, guys. Let me just bring up this thing. Today's high in NMDC is 78.50. Now let us go back to our chart. Let me just clear this a bit for you guys. Look at this. Exactly it goes there. It forms a triple top, gap retest and fail. So what was the setup? You had marked your resistance, which was a gap level. You had your pivot in a place. It has formed a 3 bearish candle. यहाँ पे एक bearish candle, यहाँ पे एक दूसरी bearish candle, and why? In my opinion, the reason you would like to trade, देखिए एक चीज तो समझिए, गैप पे आया, प्रीवियस आया, यहाँ पे भी शॉर्ट था, यहाँ पे भी शॉर्ट था, क्योंकि ये थर्ड टाइम है, ट्रिपल टॉप है, दैट्स व्हाई आई एम लाइक ऑल द मोर कॉन्फिडेंट कि ये तो गया ही है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी थर्ड टाइम में ट्रेड करना है। लेकिन पहली बार सोचिए, पहली बार आपने ट्रेड किया, नीचे आया, दूसरी बार आपने ट्रेड किया, नीचे आया, तीसरी बार गया तो भी नीचे आया। इस वक्त तो 77 वाला 67 आ गया, ऑलमोस्ट 10 रुपीज इंट्राडे। एनएमडीसी इज अ 6000 लॉट साइज गाइस। आप एक चीज समझिए, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप यू आर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ लार्जर ट्रेंड। लार्जर ट्रेंड वाज ऑलरेडी डाउन, ट्वाइस द पुल बैक। ये देखिए यहाँ पे है जो व्हाट आई हैव ऑन माय चार्ट ओवर हियर, दिस इज सेशन ब्रेक। ये जो है ये सेशन ब्रेक है, तो ये 1 डे है, ये 2 डे है, ये थर्ड है। तीनों दिन ये गैप नहीं निकला है। आज हम वहीं गए, वहीं पे मेरा प्रीवियस, तो जब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे एट द मैक्स गैप के ऊपर का स्टॉप रख के 1.5 रुपए का ठाक से ठोक देते हैं आप, and then it goes down. Let us look at one more example. Let me just show you one more example so that you make it very clear for you. Let me just remove. Okay, so this is an example of a Tata Steel, and this time I'm giving you a larger perspective. Gautam, this is for you. Gautam Sarkar was asking me a question. Why trade only on the third setup in NMDC? Were the other two false setups? No, Gautam. The reason why I traded on the third setup was because of this. See, एक चीज समझिए, ये टाटा स्टील का एग्जाम्पल है। अब देखिए, सबसे पहले तो टाटा स्टील के अंदर यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये जो क्लस्टर था, अगर आप मुझे टीवी पे सुनते हो या अगर मेरे ट्विटर पे आप देखोगे, तो आई हैव ऑलवेज लॉट ऑफ लेवल्स मार्क, और मैं एक लेवल मार्क नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज मार्क द क्लस्टर्स ऑफ द लेवल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस वाज सो इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ द लेवल विच इज 390। तो पहला तो ट्रेड द मोमेंट दिस पियर्स द 390 शॉर्ट था, चलो ये शॉर्ट हुआ, इंट्राडे में आपने पैसे कमाए, आपने बुक किया होगा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट एंड अकॉर्डिंग टू योर टारगेट। विल कम टू द टारगेट एट लेटर। अब उसके बाद में मेरे लिए जो फाइनल सेटअप था वो ये था। अगर आपने मेरा पोजिशनल का वेबिनार देखा है मोमेंटम का, आपको पता है मैं बहुत बेरिश था टाटा स्टील में। और लेट मी जस्ट ओपन अ टाटा स्टील चार्ट एनीवे फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज सो बेरिश ऑन अ टाटा स्टील, एंड देन प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप पोजिशनल को फाइन ट्यून इंट्राडे में कर रहे हो। दिख रहा है आपको? नाउ गाइस, दिस इज अ सेटअप ऑफ अ टाटा स्टील ऑन अ, तो जब ये फॉल आया, उसके बाद में ये गया, तो यहां से मेरा व्यू था टाटा स्टील में कि ये खराब ही है। देयर वाज अ नेगेटिव रिवर्सल सेटअप, दिस ट्रेंड लाइन वाज ब्रेक, एंड इट हैज एवरीथिंग व्हिच आई वांटेड टू शॉर्ट द टाटा स्टील। अब जब टाटा स्टील के अंदर मेरा पोजिशनल व्यू इतना खराब था, and when it started drifting down, I was only looking for the levels जहां मैं इंट्राडे में भी उसको हेवी क्वांटिटी में करूं। तो ये जोन जो था, let me just highlight now, 1 zone, 2 zone, 3 zone, 4 zone। मुझे पता था द डे टाटा स्टील ब्रोक 390, अगर 390 आता है तो आई हैव टू अप्लाई ऑल माय एनर्जी टू शॉर्ट इट, एंड इट कम्स टू 390 couple of times and it fails। so how it would have looked, so ये देखिए, 390, 390, 390,
एंड ऑल दिस 2 days आपने यहाँ शॉर्ट किया, आपने यहाँ शॉर्ट किया, आपने यहाँ शॉर्ट किया, एंड ऑल दिस 3 days द सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल थिंग वाज पैटर्न। यहाँ देखिए, यहाँ बेरिश हरामी, यहाँ पे हैमर, और यहाँ पे ह्यूज ग्रेवस्टोन डोजी। एंड ऑन द लास्ट डे व्हेन इट ब्रोक दिस ह्यूज ट्रायंगल, ठक टूटा। अब उसके बाद में ये जो प्रीवियस सेशन था, ये प्रीवियस ट्रेडर में ट्रायंगल बना, एंड देन इट ब्रेक्स। So I am not doing anything special in my intraday. My levels are marked on a daily using the setup which I use. Then I fine tune when it goes there. Am I making sense, guys? Do I need to explain it more? Please. एक चीज और मैं बता देता हूँ, on my personal experience, intraday is the replication. I will show you a lot of example in a while, because we have a more time to spend on the example, and the system which I'm going to show you in intraday will make a lot of sense for you to understand. देखिए, आपको एक चीज समझनी है, आपका जो इंट्राडे का सेटअप है वो आपके डेली के सेटअप से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। योर अप्रोच इज डिफरेंट। एक चीज समझिए, आपको पैटर्न अगर आता है तो बहुत अच्छा है। एक और किताब का नाम, टीम, गाइस, प्रणय, कैन यू रिप्लाई ऑल द पार्टिसिपेंट विद द बुक ऑफ जॉन मैगी? सो ये एक किताब का नाम है जो हमारी टीम हमको बताएगी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स एंड कमोडिटीज बाय एडवर्ड मैगी और जॉन मैगी। ये किताब का नाम आप गूगल कर लीजिए एवरीवन। दिस इज द बुक आई वांट ऑल यू टू लर्न। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक जो पैटर्न कैसे वर्क करता है। while lot of the people may think that patterns are very simple और उसको क्या यूज करेंगे, उससे पैसा नहीं बनता है, बट आप एक चीज समझिए, अगर आपको ढंग से पैटर्न करना है, आप जॉन मैगी को पढ़िए, उसको इंट्राडे में डिमांड सप्लाई जोन और फिर क्लस्टर्स और विवेक के साथ में टाइम ट्यून करिए। आप जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग कर रहे हो उससे आप 100 times बेटर ट्रेडिंग करोगे। ठीक है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाटा स्टील। वी विल कवर वन बाय वन एग्जांपल। हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट हाउ कैंडल्स or support clusters and the pivots I use in order for me to form the larger view and trade in that particular direction. All you had to do is trade in the direction of a downward trend. Fine. So let us move now. Now, the last thing which I have saved for you guys before we go into the example is the day trade system. और ये डे ट्रेड सिस्टम है, मैं शायद पता नहीं, मैंने 2007-8 में डिवाइस किया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द मार्केट वाज फॉलिंग वेरी लार्ज, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो आई वांटेड टू ट्रेड इन द डायरेक्शन। एंड एक और चीज आपको समझनी है, ट्रेंड फॉलोइंग, अगर ट्रेंड फॉलोइंग अगर आपको ढंग से करना है, यू नीड टू हैव अ सम प्रोसेस, यू नीड टू हैव अ सम सिस्टम। सो अब जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक सिस्टम है, इट्स अ प्रोसेस, रूल ड्रिवन सिस्टम है जो आपको यूज करना है अपने प्रोसेस के लिए। तो क्या क्या चीजें होती हैं? पहला होता है वीवैप, आपको अभी ऑलरेडी पता है वीवैप क्या होता है। दूसरा होता है आरएसआई, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज व्हाट आरएसआई इज। तीसरा होता है एडीएक्स, एडीएक्स भी मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को पता है। एमएससीडी, MACD and RSI are both momentum oscillator. This is bounded, this is unbounded. And ADX I use it for a very different purpose. मैं बताऊंगा। जो एक चीज आपको नहीं पता है अभी तक, वो है केल्टनर। केल्टनर इज द ट्रेंड फॉलोइंग system or trend following indicator, especially channel, which works like charm, especially when there is a huge trending market, तो अगर बहुत लार्ज ट्रेंडिंग मार्केट है तो केल्टनर जैसा कुछ भी नहीं होता है। एंड वन थिंग विच आई हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इज दिस वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ indicators combined together। तो सबसे पहले तो आप एक समझिए कि what are you looking for। so सबसे पहले let me just explain to you केल्टनर चैनल होता क्या है। So some of you people may have heard Keltner channel. Banesh Prabhu is asking what is EDX. EDX is nothing but a indicator, और वो इंडिकेटर को मैं डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले लेट मी जस्ट टेक अप दी केल्टनर चैनल। देखिए, केल्टनर चैनल इज अ वॉलेटिलिटी indicator in my opinion।
और मुझे कोई भी इंडिकेटर, ट्रस्ट मी गाइस, यू वुड फाइंड मी वेरी टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स जो वॉलेटिलिटी ड्रिवन है. सो कैल्कुलर चैनल यूजेस द वॉलेटिलिटी एंड एवरेज प्राइसेस एंड इट प्लॉट्स अप एंड डाउन. तो क्या करता है, मूविंग एवरेजेस लेता है एक्सपोनेंशियल, उसको एटीआर के कंजंक्शन में अप और डाउन प्लॉट करता है. ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो एक चीज समझिए, केल्टनर चैनल हैज अ इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग समथिंग नोन एज द एवरेज स्टूडेंट. जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि माय फेवरेट व्हेन इट कम्स टू इज द एटीआर. एटीआर क्या होता है? एवरेज टू रेंज. ऑन एन एवरेज हाई टू लो कितना मूवमेंट आता है. ठीक है, तो अगर आप ईटीआर की बात कर रहे हो तो एवरी डे ईटीआर डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर चेंजेस. तो अगर आप 14 दिन के एवरेज की बात कर रहे हो तो 14 दिन के एवरेज हाई और लो से कितना मूवमेंट आता है, हाई एंड लो का एवरेज मूव कितना होता है. तो अगर एडी ईटीआर बढ़ रहा है तो मतलब वॉलेटिलिटी है, और अगर ईटीआर नीचे आ रहा है तो वॉलेटिलिटी कम है. तो ये इंडिकेटर क्या करता है, इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम टॉकिंग अबाउट केटलर, वो क्या करता है, ईएमआई को एटीआर के मल्टीपल पे प्लॉट करता है. तो तीन चीज प्लॉट करता है, ईएमआई मिडिल बैंड में, ईएमआई प्लस एटीआर एंड ईएमआई माइनस एटीआर. मोर और लेस लाइक मोर और लेस लाइक बॉलिंगर बैंड. बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू बॉलिंगर बैंड बिकॉज इट गिव्स अ फिनोमिनल ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक. ठीक है, a little, so इस ये कैलकुलेशन मैकेनिज्म है. सम ऑफ यू पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड कैन जस्ट रेफर टू दिस. अपर बैंड इज इक्वल टू ईएमआई प्लस एटीआर मल्टीप्लायर. इन दिस केस हम दो एटीआर यूज करेंगे. मिडिल बैंड इज ईएमआई एंड लोअर बैंड इज ईटीआर माइनस ईटीआर मल्टीप्लायर. आपको एक चीज समझना है, क्योंकि आप एटीआर और एवरेज दोनों को यूज कर रहे हो, तो जब भी बड़ा ट्रेंड आएगा इसमें बहुत सुपरबली कैच होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे. एंड दिस इज द ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम व्हिच आई नॉट ओनली यूज फॉर इंडेक्स बट आल्सो फॉर द स्टॉक्स. सो जहां तक कैलकुलर चैनल की बात है, I would like to give a due credit to the developer introduced by Chester Keltner in the 60s, but indicator was updated by Linda Raschig in the 80s. अगर आपको पता है, Linda Raschig is the one, she is the one of the finest trader I have come across, has written a very very fantastic book, और she has made it very popular. उसने इसमें बहुत सारे changes लाए थे. इसमें दो चीज होती है, एक होता है आपका ईटीआर विच इज द मेजर ऑफ द वॉलेटिलिटी. और इस केस में जहां पे अगर, क्योंकि ये इंट्राडे फ्यूचर्स का वेबिनार है और हम ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी वो चीज यूज नहीं कर रहे जो ऑप्शंस के रिलेटेड है, हम फ्यूचर्स से ही चीजें ड्रिवन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ईटीआर जो है वो वॉलेटिलिटी को जज करता है, again developed by the Wells Wilder. Wells Wilder is one of the finest analysts globally. He is the one who famous the RSI and everything. Now what it does is इंट्राडे के अंदर ईएमए प्लॉट करता है, एंड मेरे हिसाब से डे ट्रेडिंग के लिए 13 to 34 ईएमए इज वर्क. अब इसको भी आपको कब यूज करना है, जब जब मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन एंड वॉलेटिलिटी आती है. तो आई विल शो यू. एक चीज समझनी है आपको कि कॉमन मल्टीप्लायर इस इंडिकेटर के अंदर दो एटीआर यूज होता है. आप क्या करते हो, दो एटीआर ऊपर और दो एटीआर नीचे ईएमए को प्लॉट करते हो. ठीक है. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट इज, आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, you have to adjust the Keltner channel का parameter according to the volatility of an instrument. ठीक है. You are looking for a clear breakdown and trending moves. You are looking कि Keltner के नीचे ट्रेड कर रहा है या ऊपर ट्रेड कर रहा है. And it has a three setups like VWAP only, breakout strategy, test strategy, and इन दोनों का combination. And मेरे personal trading में the maximum that I use is the combination of Keltner. और जब भी VIX is above 20, Keltner works beautifully in index also. And when I'm talking about 20, I'm talking about a Nifty and Bank Nifty 25. तो जब इंस्ट्रूमेंट वॉलेटाइल है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर अप डाउन मूवमेंट हो रही है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत बड़े मूव्स आ रहे हैं, this is a brilliant indicator. Fine. So far any questions before we move forward, because I'm going to talk about the systems now, and let me just go to the chart. Before that, let me just ask a question. अगर किसी को question हो, we will take up and then only we'll move forward. So please ask your question.
शिबेंदु इज आस्किंग क्या हम वॉल्यूम चार्ट यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज वॉल्यूम चार्ट, बट इंट्राडे के अंदर आई हैव फाउंड वीवैप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट बेटर. Harjeet is asking with the book on the chart. I would say, Harjeet, just Google John Maggie, technical analysis of stock trends and commodity. Pranay, can you please reply? Okay, Nilesh is asking, what are the ATP levels? Average traded price levels are nothing but your VWAP plotted. You're plotting midpoint, you're plotting high, low, all the things on your chart. It works fantastic in intraday chart. Khushbu is asking, please explain how to plot Keltner. Khushbu, I will explain in some time. Keltner पे हम detail में जाएं. Yes, yes, Gautam, I'm going to talk a very dedicated system about the Keltner sometime. Guys, I have just started about Kettler. I'm going to give a very good example. Raghu is asking how to choose the stock for intraday. Raghu, you have to select the stock based on your positional scanning, which I will talk a bit. Subhashish Mishra is asking for index, which time frame to use. Subhashish, my view comes from daily and hourly, and I fine tune on 3 minute and 5 minute. So अगर आप intraday trader हो, आप 3 minute 5 minute is best time frame to trade index. Harjit is asking webinar pe pattern. I will do that. Let me just think about it. Khushbu is asking, should I take trade only after 1 o'clock? I know a people who take trades only after 2 o'clock because उसके बाद में trend बहुत clear होता है. There is no ambiguity. Difference between Bollinger and Kelter, Shivendu. In Bollinger Band, what happens? You are plotting the standard deviation above and below the moving average. Here, you are not plotting standard deviation. You are plotting the ATR. You know, ATR के ऊपर you are plotting the moving averages. So that is the basic difference. But the way I tell the Keltner is very different. Banesh is asking how to use VWAP in a bullish market. Banesh, the same way you can use in a bullish market also. Test of VWAP, oscillation of VWAP, and a break of VWAP. 3 setups. Kishore is asking how many charts I have open on underlying for intraday trading. See, I always have a Nifty Bank Nifty 3 minute, 5 minute chart running, and for stock I'm using a 3 time frame: daily, hourly, and 15 minute. Ravi Kumar is asking, please go ahead, otherwise time will over. Okay, I will take care of that, Ravi. Don't worry. Ankesh asking, is in VWAP strategy how to fix a stop loss? Your stop loss is of swing high, above VWAP, or above midpoint or a low point. It is a function of what sort of trade you are doing. Praveen is asking, how do we identify the stock before a 1 day for intraday? I mean the pattern to screen. I have talked that about in our positional webinar. You can go ahead and look that. Fine, guys. So let me just now take up the system. So far we have discussed about the Keltner, the setup, and this is how the chart is looking like. Everybody? So this is the system which I was referring. It has a 3, 4, and 5 indicator, to be very honest. The yellow line is the VWAP. This is your VWAP. Okay. This 3 lines, green, red, and the gray, is your Keltner. Okay. This is your typical MACD, 9249. This is your RSI, and the last is your ADX. So this is how your setup looks like when you are doing a trend following on index using the Keltner. So what is the setup? Okay, in the first few slides, let me just go back. Yeah, over here, this is today's chart. Over here, we talk about a test of VWAP. This is the Bank Nifty test of VWAP. How do we have traded this setup and how we would have wrote this setup using our system? So a lot of people were asking कि कैसे find करें, कैसे trade करें. Now I'm making it very objective. So this is a chart, and on this chart, this is today's Nifty chart. ये आज का 18th of March का चार्ट है, और आज का चार्ट है मार्केट ओपन, मार्केट पुल बैक टू VWAP, लार्जर ट्रेंड नेगेटिव था,
टेस्ट ऑफ वीवेप नेगेटिव हुआ, इट ब्रोक बिलो ऑल दी levels of the Keltner, short on the MACD. One more setup which I have already talked with you guys during our positional webinar, and अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये यूज करना है. एक चीज समझिए, मैंने पोजिशनल वेबिनार में मोमेंटम के लार्जर सेटअप्स आपको डिस्कस किए थे. यहाँ पे एडीएक्स को देखिए, दिस टेस्ट ऑफ VWAP on the RSI was nothing but a negative reversal. Negative reversal is a setup where your price pull back, but but your RSI pull back, but price does not break the previous swing. तो ये swing था, ये इतना pull back किया, इसने यहाँ किया, it failed at the VWAP, it formed the bearish candle and it started going down. अब आपकी entry कब होती? You take an entry when your ADX goes above 30. So let me just highlight, change the ink color. Your ADX here goes about 30. You break this swing, you keep a stop above here, and you ride the rally until it comes above Keltner. तो आपका short आया था around 8750 and you were in profit till 8500. So you would have made a 250 points in Nifty using this system. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. So market open, and in the bank Nifty we had a clear setup which was bearish setup. Bank Nifty more setup. Nifty came down, went to VWAP, formed a bearish candle. This is in sell, and one thing you should note is that your ADX difference, your MACD histogram is negative, which is below zero, and below zero the sell is coming. One thing you should understand, अगर आपका MACD जीरो के नीचे सेल सिग्नल देता है, इट्स मोर पावरफुल शॉर्ट सिग्नल, ठीक है. योर RSI हैज अ नेगेटिव रिवर्सल, और यहाँ पे ADX का खाली इतना ही यूज है, वी आर जजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड. द मोमेंट इट स्पाइक्ड द रेड लाइन, you know, this red is the directional. ADX, as somebody has already explained, is the average directional move. यार ठीक है, तो इसके अंदर में your red moves are your minus DI. जैसे your minus DI move started becoming bigger and it went above 30 and this breaks this swing low, आप यहाँ पे entry लेते हो, your stop is here, you don't book your position until it comes above your Keltner and then it keeps going down. So this is how you ride. Yes, you're using for minus DI. ठीक है, we'll take a more example for you to understand. So ये निफ्टी फ्यूचर था. Now I am giving you an example, one more example है यहाँ पे, ये है PVR, ठीक है. ओके, ये PVR का एग्जाम्पल शायद राइट ना लगे आपको, लेकिन फिर से समझिए, PVR के अंदर में वीकली चार्ट पे ये इतना ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, और जैसे ही लास्ट 2 वीक का लो टूटा, उसके बाद में स्टॉक 1900 वाला 1000 रुपीज आ गया. That's like a 50% fall in the stock. You understand? That's a 50% fall in the stock. How would you have traded this stock? The same way, सारे shorter term time frame पे PVR had only single pattern, which was this. So on a larger time frame, when something bearish forms, and on a lower time frame, whenever the consolidation breaks, you're talking about a short. Now हमारे सिस्टम में कैसे ट्रेड करते हैं? तो I have highlighted this particular setup of the PVR. 30 मिनट के चार्ट के अंदर this was your ट्राइंगल, केल्टर के नीचे गया, VWAP के नीचे गया, RSI के अंदर में नेगेटिव रिवर्सल एंड योर डाउन मूव. तो आपने यहाँ पे एंट्री ली होती समवेयर अराउंड 1900 and the stock went to 1600 in a matter of 1 hour. तो PVR कैसे सिलेक्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, PVR came from your larger time frame, which was bearish on a weekly chart. Another thing, stock has a typical formation, which is a consolidation and breakdown. How would you find out this consolidation? You would look for your Keltner, VWAP, negative, and ADX setup. So first, price breaks below VWAP, triangle टूटता है,
RSI negative reversal, and ADX above 30, that's your entry. Let's look how would you have looked here. So one more thing you are looking for is whenever a RSI forms a negative reversal. तो हमने previously हमारे webinar के अंदर में reverse negative reversal को बहुत अच्छे से explain किया था. See, prices fell, it did not break the previous swing low, forms the negative reversal, break below your Keltner channel, VWAP, ADX above 30, boom. Now in this particular thing, in this particular example, let me just highlight a bit. In this particular example, you see this is a 15-minute chart of a PVR. So people, I will open the chart in some time and I will show you. इसमें केल्टर में सेल आया, वीवेप के नीचे गया, ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ, एमएससीडी सेल, नेगेटिव रिवर्सल, ईडीएक्स अबव 30. आप कोई भी स्टॉक लगा लो, and the reason we are using Keltner, okay, I'm just sharing one more time. The reason you are using a Keltner over here is because Keltner is a volatility based indicator, and we are using the default parameter right now. I have not even adjusted for it. The moment the trending move comes, the move comes very, very sharp in that particular direction. Okay, let us take one more example of IndusInd Bank. ये IndusInd Bank है. IndusInd Bank में larger time frame पे ये लो तोड़ा weekly पे, the stock was bearish. Then अब देखिए ये पूरे fall में the stock never came above Keltner. बट ये जो पुल बैक आता है, और ये जो पुल बैक है, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था. Yeah, this particular pullback, when it came, this was 50%. This particular was a 50%. 50% pullback होने के बाद the stock started falling, and आपका extension पे से your IndusInd target was about 400 rupees, and on a expansion basis target was 380 rupees. So you knew it was a bearish stance on a larger time frame, and when on a shorter time frame chart it pullbacks, it goes into Keltner, it breaks the Keltner, forms the negative reversal pattern, ADX is above 30, and boom. So your entry would have been here around, and this is 30 minutes of IndusInd Bank. Your entry would have been around 760 odd level, your stop loss 810, and you would have not cut your position till 360 rupees. Am I making sense? I'm sure a lot of the people would have had a doubt. Let me explain the one more time IndusInd Bank. So this is an IndusInd Bank का अलग से example. It pullbacks to Keltner. It forms a negative reversal. Because my view is bearish, the larger time frame is giving me a target of 400 odd rupees. Now it breaks the swing. This goes above 30. It breaks the Keltner. This is the stop loss, and you are never cutting your position. So from 580 or to 360. And in some time, I'm going to show you a lot more example, right? Let us take one more example. This is Bank Nifty, and this is Bank Nifty today's example. Your 3-minute Bank Nifty along with the Keltner channel, along with the yellow VWAP, right? MACD gives sell, fails at the VWAP, negative reversal, you sell, stop loss here, and it keeps going. Now Jay is asking a question that how do you find out the target of the this thing? See, in a Keltner channel, I'm not very bothered about the target. I'm bothered about riding. How would I ride? I would ride my stop loss with the upper band of the Keltner channel, and here probably I would have stopped your riding. 2. Otherwise, you are using a fib clusters and fib extension. Yes, Kunal is asking a very good question. On ADX for positive move, we look at 8 plus. ADX for negative move, we look at the minus. Is that understanding correct? Yes, Kunal, that's right. When you're talking about an additive, you are looking for a more
DI मूवमेंट अबो 30 के ऊपर में अगर मूव आता है तो वो स्ट्रॉन्गर मूव है। अब क्योंकि वो रेड मूव है और डी माइनस DI मूव है, दैट इज द स्ट्रॉन्गर मूव इन द डाउन साइड, डाउन डायरेक्शन। Keltner is a volatility based indicator. You are looking for a Keltner for a trending moves. And in the current market, the nothing works, but the ETR based indicator works. So ब्यूटिफुली वर्क्स। ये 3 मिनट चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको 500 500 1000 पॉइंट का रैली देता है, सिंपल। बट मैंने उसको बहुत सिंपल किया है, मैंने फाइन ट्यून किया है। टेस्ट ऑफ वीवैप, नेगेटिव रिवर्सल, सेल एंड बूम। Keltner, okay, so Sandesh is asking a question. Please explain the Keltner line. Keltner has a 3 line. Upper line is basically your EMA, your plus ATR. Lower line is your EMA minus ATR, and middle line is your EMA. Okay, I will explain the chart in some time, and we will see the how the yes, Bank Nifty has a beautiful negative reversal, guys. अगर आप if you have attended my positional momentum webinar, you'd be able to understand कि how I use the same concept in intraday. But क्योंकि intraday में volatility ज़्यादा होती है, the way answer is, the way I do is, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने higher time frame को lower time frame पे plot करने की कोशिश करता हूँ। Let us take a same example. बट दिस टाइम हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया है, और हम इस बैंक निफ्टी का जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल दिस फ्रॉम द 4th March डे। बैंक निफ्टी 25,000, it goes to VWAP, it doesn't sustain, goes below Kettler, and ADX starts above 30। अगर आपने एंट्री यहां नहीं ली होती है तो when ADX again starts above clear 30, यहां पे आप यहां पे लेते हो, स्विंग लो होता है, VWAP का स्टॉप लॉस 28,800 is your entry, 28,200 intraday it makes a low. Yes, Sharad, that is a good question. How to decide 15 minute? For a stock, I use 15 minutes. For index, I use 3 minutes and 5 minutes. Sharad, I use stocks 15 minutes, and for index, I use 3 minutes and 5 minutes. Sandesh is asking question. I have answered. I think Sandesh ji, I have answered you. Will DI crossover to use? I don't use. I use for the strength. आप देखिए in this particular chart only, आप देखिए the biggest strength came in ADX above 30 यहाँ पे, और उस वक्त खट से प्राइस टूटा है, 28,800 वाला। So along with the, एक चीज समझिए आप, see ADX is nothing. ADX is a strength determination over trend. इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि आपको अलग अलग ऑसिलेटर यूज करने हैं अपने इंडिकेटर में, अपने सेटअप में। EDX इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो अगर EDX 30 के ऊपर है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड इज गुड। सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ माइनस। सो अगर माइनस EDI इज अबाउट 30, यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेंथ इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। Keltner is your volatility based trend riding technique. VWAP is the day's imbalance of a buyer and seller. ठीक है, that's it, that's just a combination, and I'm using it from last so many years and it works like charm. ये particular form में this could have been the best thing. तो in this particular example देखिए, the trade could have been entered here, this was your setup based on the VWAP, but अगर आपने यहाँ पे मूव नहीं लिया है, it is constantly below, but when it breaks, when ADI zooms, तो अगर आपने यहाँ एंट्री लिया है तो भी बहुत हो गया ना आपका। and this is a pure intraday system for the index I'm talking. Same thing you can use for up, but I couldn't find a lot of example this day, but I could show you the lot of example when the bull markets are also there. But why don't Soham, why don't you go and probably make some long example and verify yourself that what I'm saying makes sense. सो इस पर्टिकुलर केस में व्हेन विल आई एंटर नेक्स्ट, तो एक चीज तो देखिए, आज के दिन में टुवर्ड्स क्लोज एक नेगेटिव रिवर्सल का सेटअप बन गया है। अब मेरा ये कैलकुलेटर के ऊपर है, लेकिन मेरा वीवेब के नीचे है, और मेरा एडीएक्स में माइनस डीआई और प्लस डीआई जो है दोनों 30 के नीचे है, तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस किशोर जी? The trend doesn't have a strength because neither of the plus DI or minus DI is above 30. So current strength of a trend is not there, even though pullback has come. So now when the price starts falling up below Keltner and ADX move, that will be my entry.
Khushbu is asking a question that can exit will be judged only by Kelter channel in all trade. See, देखिए खुशबू जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Whenever you are trading something like this, and especially huge volatile environment, you have to understand one thing, that the best way to trade is the trend. अभी यहाँ पे जब मेरा इसका सिग्नल आया था, यू नो, नेगेटिव रिवर्सल, ये देखिए नेगेटिव रिवर्सल था, ये था, और अगर मैंने इसकी एंट्री करी होती तो यहाँ करी होती 30 के ऊपर, तो मेरा जो 600 का सिग्नल था वो 400 रुपए तक सेल ही है. सो आपको तो ये ढूंढना है कौन सा स्टॉक में कांड हो रहा है. I use the word can't. The reason I use the word can't is all the places where there is a bad thing happening, India Bulls Housing, IndusInd Bank, RBL Bank, Just Dial, all the stocks which are falling like pins, you have to go and apply this strategy. और एक ही लॉट में आपको इतना पैसा बन जाएगा कि आप, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे साथ में दिक्कत क्या है, हम प्रॉफिट में 4 रुपए में खड़े रहते हैं और लॉस में 100 रुपए तक खड़े रहते हैं. So this is the system which will keep you in the trade for longer time. This is a trend following system, and it works fantastic in the intraday trade. Or why it works? Because a volatility based indicator. And how are we determining? Strength of the trend is determining based on ADX. Right now, let us look at. Okay, so it's what, 8:20. We are like 10 minutes to go. Let me just quickly explain. Yeah, Sandesh ji, this is a very simple indicator. I use it from like so many years, and it is available across the platform. That should not be the issue at all. Now, okay, Deepika ma'am is asking a question, that how to scan a stock. See, you are scanning the stocks based on the how volatile the environment is. अगर आपने हमारा पहला वेबिनार नहीं देखा है तो I would highly recommend आप वो देखिए. और स्टॉक मैं क्या देखता हूँ, कौन कौन से स्टॉक है जिसमें वीकली में, डेली में, MACD में सेल है, दोनों में. कौन कौन से स्टॉक है जिसमें दोनों में बाय है, कौन कौन से स्टॉक पिछले 3 वीक के लो लेवल पे चल रहे हैं, या 4 वीक के, so that is monthly low. These are my simple filter which I use. Kanika is asking what is the Keltner setting. Default Keltner setting, I am not using any of the change parameter. आप चेंज कर सकते हो when the markets becomes a narrow, but ये आप एक चीज समझिए, इसके अंदर में आपने ETR ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो अगर मार्केट नैरो होगा तो ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी कम होगी, तो कैल्टर जो है वो ट्रेंडिंग को आपको कम देना शुरू हो जाएगा. बट ये इंडिकेटर का यूज मैंने तब करना शुरू किया था जब बड़े बड़े मूव इंट्राडे में आ रहे थे और आप राइड नहीं कर पा रहे थे. यू नो और मेरा जिस तरह से ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सारे अपने सेटअप्स को पुल बैक पे ही एंटर करता हूँ. सो लेट मी जस्ट load. Okay, I think now it's, let me just load that chart setup. Yeah, so a lot of people are asking me parameters क्या है. So मैं 20 day यूज करता हूँ. Let me just open. So ये मेरा चार्ट है, ठीक है, और ये मेरा Keltner है. In this case, is a बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी 30 मिनट है. Let me just make it 3 मिनट, ठीक है. ये बैंक निफ्टी 3 मिनट है, इसमें वीवैप है, इसमें ADX है, MACD है और RSI है, ठीक है. अभी कैल्टर के जो पैरामीटर आप पूछ रहे हो, ये देखिए कैल्टर का पैरामीटर है, आप देख रहे हैं, हाई लाइन, लो लाइन, एक्सपोनेंशियल 20, दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट अ डिफॉल्ट. आई एम यूजिंग अ फाल्कन. आप इस तरह से आप जिस एक्सपेरिमेंट करके देखिए. सी द पॉइंट, ओके, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ वीवैप, और क्यों मैं इसको राइड करता, द सिंपलेस्ट वे फॉर मी टू राइड दिस इज, यहाँ सेल आया था ये लो पे 21,370 पे. You could have ridden the setup till 21,400 point in a bank nifty, and it never crossed the middle band of a Keltner. बस हमने क्या की, हमारी जो एंट्री है उसको फाइन ट्यून करे. ADX का पैरामीटर अगेन अ सिंपल डिफॉल्ट पैरामीटर 1414, ठीक है, RSI 14 एंड MACD 1224. So ये मेरा सारा सेटअप्स है, ये प्रोप्राइटरी सेटअप्स है. Since you guys have trusted me with the time and money, that is the reason I'm sharing. Now let us go to our last setup, which is the how do you use the money management to your benefit.
देखिए इंट्राडे इन माय ओपिनियन इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बॉल गेम, और अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप लिवरेज को आपको लिवरेज को अपने बेस्ट के कैसे लिए यूज करोगे। तो इन दिस केस मैंने क्या किया है, मैंने स्टैंडर्ड 4 टाइम लिवरेज लिया है। स्टैंडर्ड 4 टाइम लिवरेज क्यों, क्योंकि अगर 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो ऑन एन एवरेज आपको 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन नहीं चाहिए होता है, तो यू आर लाइक अ स्टैंडर्ड 4 टाइम लिवरेज यू नो अब Ankit is asking how do we know which particular stock is going to be in that particular direction. See Ankit, मैं क्या करता हूँ, मैं एक बैंकिंग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारे जो स्टॉक्स है उसमें सबसे वीक और सबसे स्ट्रांग उन सब के ऊपर ही सिस्टम लगा देता हूँ। और अब मुझे बहुत दिन से इंडसइंड बैंक पे मेरा बेरिश व्यू था, तो मेरा बेरिश व्यू के ऊपर ये चलता रहता है। नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट थिंग, अगर आपको वो करना है देन यू हैव टू बी सिस्टम ट्रेडर एंड यू हैव टू ट्रेड ऑल द सिग्नल्स, बट द वे वी डू इज we find out which are the strong, which are the weak stock. So ये particular example में I am just giving you an example how to use leverage to trade intraday. सबसे पहले तो देखिए, आपका अगर कैपिटल 5 लाख का है तो इंट्राडे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 40% आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। 40% अमाउंट कम्स टू अबाउट 2 लाख रुपीज। अब इसको आप 10 ट्रेड में डिवाइड करेंगे। इनफैक्ट अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप इसको 20 ट्रेड में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अ बिट। हाँ, तो ये मेरा एक्सेल शीट है। तो अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप इसको 20 ट्रेड में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये चूजिए, द पोर्शन विच आई वुड लाइक यू टू फोकस इज दिस वन। ओके, सबसे पहले आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने कैपिटल को सबसे पहले अनइमोशनल रिस्क कैपिटल में डिवाइड कर रहे हैं। अनइमोशनल रिस्क कैपिटल इज द कैपिटल, अगर आपका वो टूट गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ नॉर्मली। फिर आप उसको 20 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 20 पार्ट में मतलब आप अज्यूम करते हैं कि आपके कंसेक्यूटिवली 20 ट्रेड्स गलत गए, तो आप कितना पैसा तोड़ना चाहेंगे, आप उतना तोड़ना चाहेंगे जितना आपने डिसाइड किया। तो 2 लाख के 20 पार्ट होते हैं अबाउट 10,000 पर ट्रेड। फिर आप क्या करते हैं, रिस्क पर ट्रेड ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। तो सपोज इंडसइंड बैंक में मेरा 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और 400 का लॉट साइज है, तो मेरा रिस्क बनता है 8,000। और इसके हिसाब से मैं फॉर्मूला को यूज करता हूँ राउंड डाउन, मेरा रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय दिस, तो मुझे एक लॉट का अमाउंट बनता है। अगर आपने इसको 10 किया है तो 2 लॉट भी बनेगा। तो आप इस केस में 2 लॉट इंडसइंड बैंक ट्रेड करोगे। तो लेट अस ओपन द इंडसइंड बैंक। ये इंडसइंड बैंक है, and let me just make it a 15 minute for you guys। ठीक है, ये था वो रिट्रेसमेंट वाला सेटअप। और यहाँ पे कैल्टर के नीचे गया, ये सेल में आया एंड इट मूव अबोव 30, मूव अबोव 30। ये भी सेल में है, कैल्टर के नीचे है, वीवेब के नीचे है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है। let us see the what is the entry. Your entry becomes here somewhere around 655. Your stop loss is around here, which is 708। so let me just open excel। so 655 entry, 708 का stop loss, stop loss for 53 rupees। तो इस केस के अंदर में if your risk appetite was this much, it would have not allowed you to enter। तो आप क्या करते, थोड़ा stop loss को और टाइट करते। इस केस में let me just zoom it a bit। आप बोलते कि चलो मुझे ट्रेड को ट्रेड करना है तो मैं वीवेब के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। इस केस में यू आर पुटिंग योर एंटरिंग हियर, यू पुटिंग योर स्टॉप लॉस अबोव 686 अपर बैंड ऑफ द कैलकुलर। एंड इस केस में कंजर्वेटिव वीवेब रहेंगे तो 678। नाउ लेट मी जस्ट पुट माय 678 स्टॉप लॉस, तो 23। तो माय स्टॉप लॉस इज 23। सो इट टेल्स मी कि अगर मैं 23 रुपीज का स्टॉप लॉस रखता हूं और 400 का लॉट साइज है, मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करूंगा। तो आपका 650 पे 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आप ट्रेड करते हो, एंड दैट डे इट वेंट टिल 592। सो यू मेक 650 to 590, you made about what, 60 rupees। so that is on your trade 60 multiplied by 400, you made a 24,000, which is of your risk amount ka 2 times initial। same setup,
it bounces back, it goes to that, it doesn't fall, EDX goes negative reversal setup, you make an entry on this low around 547, your stop loss is 610, or in this case just above VWAP 575 is your stop loss. So your entry is around this low 549, your stop loss is around this level which is above VWAP 580. It tells you 32 rupees stop loss. So you can do one lot. Now you trade a one lot here 57 around 555 odd, and it goes to 100 rupees down. So you make about what, 100 rupees, you made about 40,000 rupees. Now this particular sheet is focusing on how much you should risk when you're trading, and this particular sheet portion will tell you how much you will make if you follow this particular way. So assume your strike rate is just a 50%, but every time you trade with the 1:3 risk reward. Your capital is 5 lakh, you are doing a 4-time leverage, so every time your expectation is just a 2% on your capital, which is 40,000. But if the 13,000 happens in this case, this much, you will exit. तो अगर आप साल के 100 ट्रेड भी लेते हो, आपके 50 ट्रेड ही सही जाते हैं, 50 ट्रेड गलत भी जाते हैं, you still make a 13,33,000 rupees after 1 year. And I'm assuming 52 week you are just taking a 2 trade per week, और उस केस में अगर आपकी accuracy 70% चली जाती है, your return can be 24 lakh also. If it is sounding too much, the magic over here is nothing but this particular thing, risk to reward ratio. आपको बस अब खाली यही करना है कि आपको ऐसे ट्रेड ढूंढने हैं जो आपको इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे, और इस केस में फिर आपकी अगर एक्यूरेसी 30% भी हो जाती है तो भी लुक एट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यू विल मेक अ 133% रिटर्न ऑन योर 5 लाख कैपिटल. आपको 100 ट्रेड साल के करने हैं, बट आप जब ट्रेड करो तो आपकी सिंपल रिक्वायरमेंट है, आपका टारगेट हो 5% का और आपका स्टॉप लॉस हो उसका 1/3 का. 1.6% इज, तो इस केस में अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 4% टारगेट, 1.3% स्टॉप लॉस, दैट्स इट. जब ये क्राइटेरिया मैच हो तभी ट्रेड करना है, ना मैच हो तो नहीं ट्रेड करना है. And the setup that which I have discussed today, the setup that I have discussed today are very good enough for you to trade that setup. Am I making sense, guys? So that brings to an end to our session. Thank you so much. We're going to take up a question and answer session for next 10 minutes. I have answered most of the question on the way, and along with that, we will take a goodbye. Fine. So please ask your question if I have not answered so far. Pranay, can you flag the questions which I have not answered so far? Khushbu, you are asking my view on Bajaj Fin, so I'm really sorry. I'll answer that offline. This webinar is only meant for the strategy which we have discussed. I'm not sure what you're asking, Amit. Nilesh, I think our team will consolidate the list of books and probably share with you all. We are replying in the chat box, so you can see the chat box. Guys, just a humble request, after the webinar you will receive the survey on the dashboard. Please answer that. It will help us making the presentation better for the next coming options webinar. Shankar is asking, please explore stock selection. Shankar, the very simple thing is short the weak and buy the strong. I am showing you the example which were the weak stocks. Mayur is asking, IndusInd Bank 15-minute breakdown was big red candle. How to trade after that fall? You have to have a level in. This is an intraday, Mayur. So during the day your level was marked. If that level starts breaking, you have to initiate short position. Kishore, you will get the webinar of the entire thing. You will be able to watch the entire webinar series.
Harjeet, you have to scan the stocks positional 1 day prior. So when you're coming, you should prepare with the weak stock and strong stocks, and then you are applying this thing. Shankar is asking, is it just a weekly MACD crossover, daily Yeah. So Shankar, this is not a that similar setup, but this works fantastic in an intraday. You are just shorting the stocks which were already weak. Vinay, whether we should take the trade as per VWAP or full setup. Vinay, I prefer to take setups on VWAP also, especially index. But when it comes to stock, I use the entire setup, which is Keltner plus VWAP plus RSI plus ADX, and along with that MACD is there. That's fine. And after all this thing, एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मार्केट गिर रहा है तो शॉर्ट करो ना, कौन आपको रोक रहा है? Thank you so much, Gautam. I really appreciate. Please wait, guys, for you have to fill the webinar questionnaire. It will help us. Sharad is asking, what is the percentage win rate since you are trading the same setup? I think the Sharad, the win rate is above 75%. The way I trade this setup, Sharad. Ravi is asking, can any special feature gift for combo subscriber of Mumbai trading? Till now I have attended both. We are full satisfied. Thank you so much, Ravi. I will probably announce a live trading for all my webinar participants in the future. But please wait and answer all the questionnaire. Yes, a lot of people are asking about the questionnaire. What I'm going to do is I'm going to just attach that questionnaire in the handout, and you will be able to use it. So guys, please use the handout section. I have uploaded the this Excel sheet over there. You will be able to download the Excel sheet from our handout section. So all the people who have left already will not be able to download. I have uploaded that risk reward sheet in the handout section. Please download. Please download. Thank you so much, Harjeet. Shubhendu, we use a default Kelter setting which is 20 exponential and 2 ATR. Suham, we due to the corona, we have avoided having a physical workshop. We are soon gonna launch a lot of courses, and a lot of stuffs are pending in our future. Pawan, I have already shared that Excel sheet in the handout section. You'll be able to download. Soon we'll plan to Pune. Okay, guys, thank you so much. This is the end of our webinar. I am ending the webinar, but please, while I end the webinar, you answer me all the survey questions. This will help me making the webinar better in the future, upcoming future. Thank you so much, and thanks for having me.